Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight. Yo guys, what's up? Welcome to the stream. Hello, Buff. What's up? और वो फोर्टनाइट खेलता है कि नहीं? हाँ मैं देखूंगा ना इवेंट, पूरा इवेंट है, ठीक है ना सब? जोन में भी हो, मेरे को जाना है। उद्भव देखने वाला इवेंट, बैटल पास कंप्लीट कर देते फटाफट। ओके, बैटल पास तो कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ बचा वो ये वाला स्किन जो बैटल पास वाला अपना, सॉरी वो सीक्रेट स्किन है, वो बचा बस, बाकी तो हो गया अभी। उसको कैसे ये करते हैं, क्लेम करेंगे क्वीन वाले? इसके टास्क कहाँ पे मिलेंगे?
और बैटल स्टार्स क्या करने हैं अभी? अभी कहाँ पे यूज होंगे बैटल स्टार्स? अच्छा इसके लिए। Yo, Ishan. What's up? I'm fine. How are you? एग्जाम हो गया? हेलो फ्लेमस्टार भाई। फिरोज भाई। हेलो फिरोज भाई। How are you? मैं ठीक हूँ। तुझे नहीं ना बुखार जुकाम कुछ? आ रहा हूँ वेट हो गया। देखने वाला है परसों इवेंट? हाँ मैं देख रहा हूँ। नाइस। मैं तो होटल पे देखूंगा अभी। मेरा ना मतलब दादी का ना बर्थडे आ रहा है 5th को, तो मैं अभी उनके साथ वो अपनी फैमिली के साथ जिम को आप जाऊंगा, तो मैं होटल पे देखूंगा आराम से बैठ के। हाँ। और मैं शायद से लैग होगा ना, क्योंकि वहाँ पे वो वाईफाई का पता नहीं क्या होगा उधर। मैं शॉटगन एम इज अ शॉट्स फिलहाल बहुत खराब, बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ मैं पेन। अब पीसी पे हाँ हाँ ईशान, तेरे को क्या लगा मैं किस पे खेलता हूँ? मिस्टर चुंगस्टा कब आएंगे क्या पता, वो आएगा कि नहीं, उसका आज का भरोसा पता नहीं मतलब है कि नहीं है। वो आजकल कम ही खेलता है क्या? ओ भाई पैर गिरा दी बंदे ने। अच्छा मेरे को इसके लिए गाइड करो अभी, कौन से टास्क है वो? आपका गोल्ड मैक्स हो गया? पता नहीं मुझे। मैं तो अभी ग्राइंड कर रहा हूँ गोल्ड, पूरी बाउंटी का बोर्ड सारे देख लिए मैंने। हाँ मुझे सीक्रेट स्किन चाहिए। हाँ क्यों क्वीन? मैं दोस्त का मैं फिरोज भाई। हाँ दोस्त का मैं मैं फिरोज भाई। आजा मेरा गेम खत्म हो जाएगा तो।
गाइस लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार स्ट्रीम को। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू द स्ट्रीम प्लीज डोंट forget to subscribe. It helps me out tremendously. Yo Nova, what's up? All the best कल के लिए। जा पढ़ाई कर, पहली फुर्सत में पढ़ाई करने निकल। बाय 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 बाय, गुड नाइट। ओके नो प्रॉब्लम। हाँ फिर इसमें वो डाउनलोड कर लिया लिंक जो मैं आपको भेजा था डिस्कॉर्ड पे। वो पोकेमॉन वाला? नहीं 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 फिलहाल नहीं। विल यू प्ले हेलो इनफाइनाइट? हाँ यस यस आई विल प्ले। इस हफ्ते पक्का शायद। मैं बाहर ही हूँ इस हफ्ते भी, थोड़ा बाहर जाना। संडे को रहूँगा कि नहीं पता नहीं मुझे, बट मैं ट्राई करूँगा पूरा। मैं खेलूँगा वो जल्दी। मैं वो स्ट्रीम पे खेल सकता हूँ ना? स्ट्रीम पे ही खेल लूँगा। एक काम करता हूँ, बेस्ट रहेगा। ओ भाई अच्छा तू भी खेलने वाला है ईशान? वेट करना मेरे मरने के बाद। ओके ठीक है। ओ भाई भागो। सॉरी है कि नहीं पता नहीं मुझे। अरे आप पेमेंट स्ट्रीम करोगे ना? हाँ आप पेमेंट स्ट्रीम करोगे? हाँ इवेंट स्ट्रीम करने वाला हूँ। मेरा भी मोड था कि मैं स्ट्रीम करूं, पर ना मेरा वो है ना क्या कहते हैं, वो इंटरनेट उधर कम होना है। वो जंगलों के बीच में ना जिम करो। अरे यार शिट, अरे मरे। मेरे को पता नहीं था वो लास्ट बंदा यार, देखा ही नहीं मैंने इस पे। अगर पता होता तो उधर में शूट मारता। चलो कुछ ना होता। लेट जाऊंगा ना। ओके ओके ईशान 8 तारीख को आने वाला है लगता है, 8 को आने वाला है, तो 8 को खेलेंगे। 8 को नेक्स्ट सीजन की बात करो क्या? नहीं नहीं हेलो इनफिनाइट। हाँ नेक्स्ट सीजन तो नेक्स्ट डे आएगा ना, मतलब सैटरडे संडे को आएगा शायद। नहीं नहीं, अरे वो उसमें ना वो जो ब्लैक होल हुआ था ना, वैसा डाउन टाइम होने वाला 3 दिन का। 3 दिन का है तो 6 तारीख को शायद से। हाँ अभी बराबर क्योंकि ना बराबर 6 कंफर्म तारीख नहीं को। हुआ, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर्स है ना वो साइफर पी के वगैरह, वो लोग कह रहे हैं कि वो 3 दिन का डाउन टाइम होगा शायद से। अच्छा अच्छा, ये वाव व्लॉग्स क्यों रुकने को बोल रहा है? जल्दी आ वाव व्लॉग्स, वाव व्लॉग्स। इनवाइट भेजिए मैं उसको। तुम लोग देखने वाले हो इवेंट? मैं तो देखूंगा, मेरी पिंग बहुत गंदी आने पर। वाव व्लॉग्स देखने वाला इवेंट या ये स्ट्रीम पे हाँ देखेगा? वो प्लेस देखेगा शायद से। आप कहाँ रही हो? फोन में तो ऑनलाइन बैठा। वो सुसु करने गया होगा। लेवल अप बहुत जल्दी हो रहा है अभी। अभी ना यहाँ कुछ सुपर चार्ज रेसिपी का भी वो बड़ा बाप डाल दिया है। वाव प्ले चलो अभी अपन ट्रियो खेलेंगे। मेरे को तुम लोग को दोनों को भी चैलेंजेस बताने हैं। वो इसको कैसे क्यूब क्वीन को कैसे इक्विप करना है।
क्यूब क्वीन का तो मैंने तो कर लिया क्यूब क्वीन। वही तो मेरा मुझे अभी तुम लास्ट लोग पे टास्क बताओ। क्यूब क्वीन का आपने क्यूब क्वीन का वो क्यूब क्वीन की स्किन मिल गई आपको? नहीं अभी तक मिली ही नहीं है मुझे। और फिर आपको तो पहले वो करने पड़े ना पहले क्यूब यार मेरे को याद नहीं है ना, क्योंकि ना मेरे को याद नहीं है अगर पहले क्यूब क्वीन के चैलेंज कर सकते सीधा, या फिर पहले ये बाकी 3 करने पड़ेंगे इमोटिकॉन वगैरह के। वो ये नहीं याद आ रहा। आपको उसमें क्या दिखा रहा है? आप एक बार क्यूब क्वीन पे जाना। एक मिनट। हाँ हम्म, वेट करना अगर ट्रियो खेलना है। ओके वेट कर रहा हूँ मैं टास्क थोड़ा देख लेता हूँ ना एक दो। मेरे को है ना क्या दिखा रहा है दिखाता हूँ मैं। एक भी नहीं टास्क हुआ है मेरा। बस क्वीन कोर्ट है ना वो आधा हुआ है। शेक डाउन अपोनेंट्स 3 बार शेक डाउन करना है। ओके मतलब ये स्क्वाड्स में वगैरह होगा, सोलो स्क्वाड जो डुओ स्क्वाड में। हम्म, ये वाली, हाँ फिर मैं समझ गया। तो फिर आपको ये पहले आपको शेक डाउन करने दूंगा मैं आपको। ये असिस्ट हो सकते हैं चैलेंजेस? हम्म असिस्ट हो सकते हैं चैलेंजेस? दूसरा दूसरा सर्वाइव स्टॉर्म सर्कल्स व्हाइल कैरिंग अ साइडवेज वेपन। साइडवेज वेपन क्या होता है? साइडवेज अपन वो वाले जो जोन में मिलते हैं ना, जो अभी नए जोन आए हैं। हम्म। अच्छा वो इसमें जो मिलता है ना वो नॉर्मल वाले वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो जरा से जो बराबर नहीं लगता है वो वाले जो साइडवेज वेपन्स। रेस मिलेगा। ओके ओके चलेगा। तो वो हो जाएगा। सर्वाइव स्टॉर्म सर्कल मतलब थोड़े टाइम के लिए स्टॉर्म में जाने का ना। हम्म, नहीं शायद स्टॉर्म सर्कल मतलब वो रहेगा। स्ट्रॉन्ग सर्कल मतलब वो जब वो पहला सर्कल फिर दूसरा जोन आता है ना, ऐसे जोन आते रहता है। अच्छा जोन में करना है सर्वाइव या उसमें क्या बोलते हैं जोन उसको, में वो सर्वाइव छोटे नहीं छोटे करना, जोन्स रहते हैं ना जिसके अंदर वो मॉन्स्टर्स जब स्पॉन छोटे होते हैं। छोटे होते रहते हैं ना जोन, तब वो सर्वाइव करने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक करके आते हैं हम लोग डुओ। चल Okay. अरे मेरे से 50 बार बचे गोल्ड के। अरे वो कुछ ग्लिच होता है जब आप वो लेट गेम और वो खेलते हो ना, अरीना लेट गेम और अरीना में ना स्टार्टिंग में आपको 50 गोल्ड मिलता है। तो वो कोई फिर आप जब लॉग में आते हो ना उसके बाद तो आपके कम वही दिखाते हैं बार्स। अच्छा अच्छा। कोई टिप किसके बारे में, वो नेट के बारे में? एक बार पूरा सब डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर, मतलब सिर्फ राउटर रिस्टार्ट मत कर। ये अपने वायर्स भी निकाल के वापस लगा के। अगर वो उससे भी नहीं हुआ ना तो उधर से प्रॉब्लम है, आईएसपी से ही प्रॉब्लम है। तेरे पीसी का कुछ प्रॉब्लम है? पीसी नहीं मतलब जो भी राउटर या फिर ये देख मेरे को ये लगा स्टॉर्म सर्कल्स। हाँ हाँ करने वाला हूँ मैं स्ट्रीम। 12 ये तो बजे आऊँगा साइड स्ट्रीम यहाँ करने। यहाँ से साइडवेज वेपन मिल गए। 12 बजे के बाद स्ट्रीम करूँगा मैं। अभी आप अभी फोर्टनाइट कितने देर तक खेल रहे हो? वो क्या 11:30 12 तक। तो उसके बाद वो खेलोगे क्या कहते हैं पोकेमॉन यूनाइट? नहीं शेरलॉक होम्स खेल रहा हूँ। पोकेमॉन यूनाइट अभी थोड़े दिन के लिए नहीं खेलूंगा।
नोवा का एग्जाम चालू है इसलिए। ओके। तुम लोग हो गए प्रो पोकेमॉन यूनाइट में? मैं अभी लेवल 10 हूँ आई थिंक, लेवल 10 या फिर 11 हूँ। अरे यार फिर तुम लोग प्रो ही नहीं बन रहे हो। पता है। और अभी मेरे पापा ना फोन लेके जा रहे हैं ना अपना वो बाहर, अभी तो मैं वो खेल नहीं पा रहा था थोड़े दिन। एक डाउन में यार थे। ठीक है फिर भाई अगर बंदा नॉक करोगे तो फेल डाउन देना। ओके हाँ, शेक डाउन करना है, याद कराना मेरे को। तो मैं शेक डाउन छोड़ के सब कर दूंगा। मैं कल फिर चेक करके रहूंगा आपको वो उसके लिए नॉक के लिए। हाँ अगर साइड वाला गन मिला ना तो भी बता। आपको दूंगा वैसे असिस्ट हो सकते हैं चैलेंजेस तो मैं वो कर दूंगा ना डैमेज अगर असिस्ट हो सकते हैं चलेगा। क्योंकि मेरे को ना वो चलाने भी आते हैं ना वो साइडवेज वाली राइफल वगैरह। मिनीगन तो वो नॉर्मल मिनीगन तो आपने चलाई होगी ना? नहीं रे, किधर है वो नॉवल मिनीगन? नॉर्मल मिनीगन मतलब पहले से चलाई है ना, तो आते हैं ना कैसे चलाते हैं मिनीगन नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल, मतलब मेरे को लगा नॉवल मिनीगन क्या है। वो नॉर्मल मिनीगन तो आपको चलानी आती है ना, फिर वो अगर साइडवेज मिनीगन मिलेगी तो मैं आपको दे दूंगा। तो वो नॉर्मल मिनीगन जैसी है। अरे यार ये डायरेक्ट मर गया। अरे यार उसने ड्रैगन ब्रेथ स्नाइपर ली थी इस बंदे ने। ड्रैगन ब्रेथ कैसे मिली इसको? इसे खरीदी होगी ना। ये लो आपको ड्रॉप कर दो। यहाँ पे ये तो कंट्रोल है। एक काम कर, तू कैरी कर ले मेरे पास उतने हाँ चलेगा ठीक है। तू कर ले फिर बाद में दे मेरे को। अभी मैं फिलहाल ये ग्रैपलर है। ओके ये वो एक्सोटिक वाली है ना, जो गेम पीछे से अभी जो एक्सोटिक वेपन है ना वो आधे प्राइस कर रहे हैं, तो ये अभी 250 रुपये मिल रही है। और वहाँ आपके पास अभी गोल्ड कितने हैं? गोल्ड है मेरे पास 2263। ओके तो फिर मेरे पास भी इतना ही होगा 2399। और स्नाइपर चलते स्नाइपर मैं कहाँ पे मार्क कर दिया और स्नाइपर मार्क कर दिया करना तो ये कहाँ पे मार्क कर दिया मैंने लाइट हाउस मार्क कर दिया क्या? ओ पापा को हम पे कैसे मार दी थी पापा को मेरे हम पे कैसे मार दी थी वो ऐसी आ रहा था पापा को वो हम पे कैसे मार दी थी बेचारे को। मेरे पास 5K है। नाइस। क्या खरीदने वाला है तू 5K का? एक मिनट मैंने ना वो देखा था रे कई बार। ओके इधर जाना पड़ेगा या फिर इधर भी जा सकते हैं। इधर पे है वो। बाउंटी लगा देते बाउंटी लगा देते बाउंटी लगाना भूल गया मैं। क्या भूल गया? ओ साइडवेज वाला वेपन साइडवेज वाला जोन छोड़ साइड में आ गया। हो रहा है क्या इधर साइड में? कुछ हो रहा है साइडवेज वाला जोन है ना ये यहाँ पे। हाँ यहाँ पे कुछ यहाँ से हम इवेंट शायद से स्टार्ट करेंगे। ये तो ना ये आ रहा है साइडवेज जोन इवेंट है स्टार्ट करो साइडवेज तो हाँ मोटे वाले जोन भी आ रहे हैं। That's funny. That's funny. If I were here in me. मेरा में जाके साइड में दो में लगाने हैं तब तक मेरे को भी मिल गया एक साइड में वेपन। चलो आप ले मिनी गन दिया यहाँ पर मिनी गन बहुत है मिनी गन। अब यहाँ से गोल्ड मिलेगा कुछ। ये पर्पल मिनी गन। एक मिनट। हेलो 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 हेलो
फिर भाई नया फोन लिया है मैंने। वो मैं हाँ तो इस पता है उठाऊंगा। तूने आईफोन लिया। तो इससे आप क्यूब वाले पार्ट ले सकते हो फिर भाई इससे आप क्यूब वाले पार्ट ले सकते हो जिससे आपको वो मिल सकता है, जिससे आप अपना साइडवेज अपन अपग्रेड कर अरे सकते हो। इवेंट और कौन कौन देखेगा? इवेंट और कौन कौन देखते हैं? अभी कौन कौन देखेगा? अयान भाई वो शायद से देखे। एन भाई ऑन स्ट्रीम देखेंगे। क्यों आएंगे नहीं? नहीं क्यों क्या हुआ? वो रात के टाइम शायद नहीं ओपन करने। वो वैसे वो कौन सी क्लास में है अयान भाई? कॉलेज में। कॉलेज में? क्लास 12th में है। नहीं बेचारे नोवा भैया और दर्श भैया। एक एक नॉक है। बेचारे नोवा भैया और दर्श भैया। उनका एग्जाम चल रहा है ना। हाँ बोर्ड के है ना भाई। हमारी किस्मत अच्छी है भाई, जिस दिन भी बोर्ड का एग्जाम होता है हमारा हाफ डे होता है। नाइस। सुन भाई ये जो आपके साइड में आ गया ना, इसमें 10 सेकंड तक खड़े हो बस, काम हो जाएगा। किधर किधर 10 सेकंड खड़ा हो। ये जो आ गया आपकी साइड में मन खड़ा हो पागल पता है। तो तभी तो कह रहा हूँ। लगा नहीं बन थोड़ा सा इसका कुछ ब्रेन डैमेज हो गया था बीच में अभी। अरे हाँ युवराज तेरे को पता है ना होटल के वाईफाई से वो कनेक्ट होता हो जाएगा वो मैं लैंड केबल लगा। लैंड केबल से भी नहीं होता। पहले होटल के रूम में पहली बात तो लैंड केबल होती है, दूसरी बात प्लेस्टेशन कनेक्ट नहीं होता है। मैं वो वैसे मैं लेके जाऊँ। तूने कभी ट्राई किया? मैंने दिल्ली के होटल से ट्राई किया, मैंने दुबई के होटल से ट्राई किया, मेरे साथ कभी नहीं कनेक्ट हुआ। अगर कनेक्ट होता तो मैं दुबई में फोर्टनाइट ना खेल रहा होता। हाँ तो अरे यार तू बॉट है। चलो आजा जोन में। उधर टीवी पे यार सब कुछ, और वो टीवी है इंटरनेट है सब कुछ है। 5 स्टार होटल बुक किया तो क्या कर क्या हूँ। अभी ये बाहर है। युवराज बाहर गया अभी। आप कर दो। ओ हाँ शेक डाउन। थैंक यू एक ये बार आ गया। अरे युवराज अब 80 FPS थोड़ी कम रेयर हो गई है। ये नॉर्मल मार लेना वो, मैं फ्लैश मारता हूँ। उसके टीममेट का भी है देख। हाँ टीममेट का भी। हाँ ये देख इधर आ। और भी हील्स है। अरे ये मार देते। वो आपको ड्रैगन ब्लड दे दूं? अब नहीं कर ले ये ले, ये कैरी कर। ये वापस ले लिया। क्यों ना मैच का कर रहा हूं, शांत रहा हूं मैं। किसी का आवाज आ रहा है यहाँ पर। अच्छा ये ग्लिच हुआ है शायद। वो गाड़ी है वो तभी। बहुत सब्जी कितना दूर है। ये बाउंसर है ना, उठा लेना। ए लॉन्च पैड मिल गया, आगे जाके लगा। मेरे को लग रहा है फिर उसमें आपको मिथिक वो चाहिए, मिथिक साइडवेज वेपन चाहिए। नहीं छोड़, मेरे को वो उठाना नहीं अभी। मैं कोई शील्ड वो भी है नहीं और उसको हील तो आपको वो दे सकता हूँ सर। वो साइडवेज राइफल है मेरे उसमें, तो आपको दे सकता हूँ बस। कर मैं वो अपने नॉक भी कैरी कर रहा हूँ ना साथ में। मैं मशीन गन यूज कर रहा हूँ ना। और स्टाइलिश क्यों आता है, आपको कन्वर्ट कर सकते हैं मैं साइड पे। अभी आपकी कौन सी रैरिटी है? फोन क्यों किया था? फोन मैंने इसीलिए किया था तेरे को ये पूछने के लिए इवेंट कब है।
एक और दिया। आजा इधर, लॉन्च पैड लगा रहा हूँ। अभी हम बढ़िया बना। अच्छा WP का ये नहीं आता तेरे को? क्या बोलते हैं, चोटी। लॉन्च कर दिया मैंने। ये क्यूब क्वीन स्किन ये की अनलॉक गैंगस्टर। सीरियसली आपने मिथिक बना लिया अपने मिनीगन को? एक मिनट बनाता हूँ। अच्छा हुआ तूने याद दिलाया मेरे को। मैं कवर कर देता हूँ। नहीं जरूरत नहीं, चला जा। तो आपके पास है नहीं क्या और पार्ट? और भी है, और एक बार कर सकता हूँ। हाँ तो आपको कवर कर देता हूँ। आपको कवर करता हूँ, बना लो, आपको कवर कर लूँगा। नहीं और नहीं होगा मेरे पास, वो स्क्रू नहीं है मेरे पास। अभी आपको दे दूँगा, ये इनको मार दे तो फिर दे देता हूँ आपको। आपकी सिस्टम बढ़ गया। अरे यार सर्वाइवल का टास्क हुआ क्या? हेलो यान, व्हाट्सअप। क्लेम कर लिया सब कुछ? अरे डांस लॉग करूं तो फिर से डांस लॉग करूं। क्या? हाँ हो गया। डांस लॉग करूं। हाँ रिटर्न टू लॉबी आ जा। ओके दो हो गए। एक मिनट, एक और एक सरवाइव करना है स्टॉर्म अभी, साइड वे गन लेके। तो क्यूब क्वीन स्किन अनलॉक होगी, उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। और क्या, यूज शैडो स्टोन ऑफ फ्लॉपर टू फेस फॉर 3 सेकंड्स नियर अ प्लेयर। ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, इसके लिए आपको लेजी लेके उतरना पड़ेगा शायद से, क्योंकि वहां पे शैडो स्टोन भी होते हैं ना। अच्छा एक मिनट देखते हैं। और वहां पे बंदे भी आ रहे थे तो इसलिए वहां पे उतरना तो पड़ेगा। उधर ही उतरते हैं अभी। उधर मतलब एग्जैक्टली लेजी उतरना। एक बार ना यहाँ पे ना मैं पता ना। हाँ मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, आप देख लेना फिर कहाँ पे लैंड करना है। फिर यहाँ से आप शैडो स्टोन बन के वो मैच रहेगा ना, आपको दिख जाएगा कहाँ पे लैंड करना है। वहां से आप वो शैडो बन के बंदे के साथ फेस कर लेना साइड पे। ठीक है चलेगा। चल स्टार्ट। फिर से आप वो भी ले ना वो। एक मिनट, इसको ये आने वाला है क्या? वो चेक कर तुम वो। ब्लॉक्स। अच्छा क्या कर रहे हो? हाँ इनवाइट भेज तुम को, ब्लॉग में तो बैठा हुआ वहाँ फ्यूरियस भाई। और वो एक बार बाड़े पास में जाके वो कर लो ना, बोनस अवार्ड्स। बोनस रिवॉर्ड, हाँ वो करता हूँ। उसके लिए और 5 स्टार मिले ना तो मैं इसको क्लेम कर पाऊंगा। हाँ वो भी आपने वो बाकी सारे कर लिए? बाकी ये मेरे को नहीं करने हैं, मैं सिर्फ जो पसंद आ रहा है वही करूंगा शायद से। और वो जब तक आप बाकी सारे नहीं करोगे ना तब तक वो आपको वो वाली नहीं अनलॉक होगी। शायद आपको बाकी सारे करने पड़ेंगे फिर वो अनलॉक होगी। अच्छा नहीं कोई ना, मैं जो मतलब इम्पोर्टेंट लग रहा है वही करता हूँ, मतलब जो यूज करूंगा। ये घोड़े वाला तो नहीं करूंगा मैं यूज, तो घोड़े का नहीं करूंगा, वो मंकी का भी नहीं करूंगा शायद। अरे व्यूज भाई वो ना आपको अगर अगले पेज की वो रिवॉर्ड चाहिए ना तो आपको सारे करने पड़ेंगे क्लेम। अच्छा अच्छा तो फिर ये बैटल पास कंप्लीट नहीं होगा ना? 200 लेवल पे सारे रिवॉर्ड मिल जाते हैं। नहीं वो मेरे को पता है रे, वैसा तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसका तो 100 टियर भी नहीं हुआ। और सुन के एग्जाम करो तो फिर होना चाहिए।
मेरा 200 लेवल वाला कभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं। वो ना मतलब वो अभी तो चैलेंजेस वो लीव करे। कौन से? असर आ गया, वो लीव करना है ये फिर वो अभी आप स्ट्रीम स्नाइप हो रहे हो फ्यूरियस भाई, आप स्ट्रीम स्नाइप हो रहे हो। लेट्स गो। कौन कर रहा है? ये बंदा हमारा मैच में है, थैंक कर बंदे को थैंक कर। मैं तभी ज्वाइन नहीं कर रहा था। अच्छा अच्छा, ये किधर लेजी लेग के किधर करना है? इधर ना? हाँ हमारी मैं थैंक कर और गेम में ये उधर होते, इधर रहेगा तो भी चलेगा ना, इधर भी आता है ना, इधर भी रहेंगे वो। हाँ इधर भी है पर यहाँ पे उधर ही पक्का नहीं ना, वो बंदे आएंगे पर फ्यूरियस भाई हाँ मैं तभी ज्वाइन नहीं कर रहा था। अच्छा अच्छा, फिर एक बार मार्क्स हटा दो, मार्क्स हटा दो, पता नहीं। अरे मैं साथ में स्ट्रीम खोली हुई है, फुल स्ट्रीम स्नाइप मूड। किधर है वो शैडो? आपको याद है हम लोग बहुत टाइम पहले बात कर रहे थे, 2-3-4 महीने पहले की बात है कि मैं आपको स्ट्रीम स्नाइप करूंगा एक दिन। अच्छा वाओ, वो 3-4 महीने को ड्रॉ भी होना है। पहले की बात अभी कर रहा है। अच्छा तो बस वेपन कौन सा है इसका तो बता दे, वेपन कौन सा भी? मैं अभी तक लैंड ही नहीं हुआ। क्या कहां क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कहां पे तू? बैरल बस से तो कूद गया ना। मैं ये बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों से ज्यादा दूर नहीं हूँ। और मेरे को किसी वो दिखी थी, मेरे को इसका ग्लाइडर दिखा था, बहुत बड़ा ग्लाइडर था तेरा। नहीं मैं एक कमरे में बड़े ग्लाइडर नहीं पहनता। पहनने चाहिए भाई, मेरे को पता चल जाता तो कौन है। इसका बड़ा ग्लाइडर पहना हो, फिर इसका बड़ा ग्लाइडर पहना हो। नहीं सही में मैंने फोटो पहना है। मैं तो झूठ बोलता है, इसकी बात मत करो, कुछ बात मत करो, बंदा स्क्रीन टाइम कर रहे हैं आपको, कुछ बात मत सुनो इसकी। मैं ये ढूंढ रहा हूँ रे शैडो स्टोन, मेरे को उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये शायद से ऊपर ही होगी, यहीं पे ऊपर वहां पे नहीं है। मेरे को आप लोग दिख रहे हो गेम में भी और सीरियस stream है पे भी। होगी। हाँ एक मिनट, मैं देख रहा हूँ गेम में नहीं दिख रहे बट बहुत क्लोज हो। मेरे को वो जगह दिख रही है जहाँ पे आप लोगों। अच्छा हम लोग साथ में नहीं, हम लोग दूर एक दूसरे। मतलब फ्यूरियस भाई का है जहाँ पे। फ्यूरियस भाई एक काम करे, लास्ट में एक दूसरे को मारे। मेरा दिल नहीं है शुरू में ही मर जाने का। ओके चलेगा। और वो पता ही है अगर कोई बूगा दिखे तो बस निकल जाना वहाँ से, कुछ भी नहीं मत करना। और हाँ वो जो बुगा है, वो बुगा को बोल रहे हो कि वो हमको बचा भी ले, अगर हम मरने वाले हो तो फिर हमने उठा भी लेना अगर लास्ट तक जिंदा रहना। ये युवराज है क्या गाड़ी वाला बंदा? हाँ मेरे को दिख रहा है वो लिटरली। पर मारना मत युवराज। क्या काम वो इतना तो बता दे, मैं मारूंगा नहीं, मिटा के होते क्या? कहाँ पर यार शैडो स्टोन्स? अरे अच्छा मैं करवाऊँ मेरे को मारना मत। कहाँ पे है? अरे हाँ मेरे से मिशन चल सकते हो, मेरे पास 3 सेकंड तक रह के। आप शैडो स्टोन ढूंढो फ्यूरियस भाई, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मैं ढूंढता हूँ, नहीं मिल रहा है मेरे को। मैं वहाँ से निकल जाऊंगा। वो है ना, तुमको देख सकते हैं अभी? नहीं मेरे को तो थोड़ी देर के लिए तेरी गाड़ी दिखी थी, ग्रीन कलर की। हाँ ये यहाँ पर नहीं है शैडो स्टोन। फ्यूरियस भाई आपके आसपास जो भी बंदा होगा उसे मारना मत, क्योंकि वो मैं ही हूँ। ओके चलेगा, आवाज आ रहा है मेरे को बंदे का। मैं आपके लिए शैडो स्टोन ढूंढ रहा हूँ। ठीक है मेरे को नहीं मिल रहा यार, कहाँ पे? कहाँ हो आप? मैं आपके लिए एक चीज लाया हूँ, पक्का मारूंगा नहीं। हाँ मैं मछली भी तो पकड़ूंगा, मैं शैडो स्टोन मुझे पता नहीं। फ्यूरियस भाई कहाँ हो आप? मेरे को दिख नहीं रहे। मैं शैडो स्टोन के पास देख रहा हूँ। क्या है? मेरे पास मैं मछली पकड़ने का ट्राई करता हूँ, शैडो स्टोन पकड़ने का ट्राई करता हूँ। कहाँ भाग रहे हो? हाँ शैडो वाली फिश मिल रही होगी ना, वो भी चल जाएगा। हाँ जी मेरे को ये आप दोनों में से किसी एक ये फ्यूरियस भाई मैं हूँ, एक गिफ्ट लाया हूँ आपके लिए। हाँ हाँ P90 मिली, शैडो प्रॉपर्टी मिली, P90 मिली, शैडो प्रॉपर्टी मिलेगी। मानो वाओ, ये किधर कब आया? ये आ गया सबका। भाई वो फ्यूरियस भाई को ब्लिंड डॉग देख के निकल गया। फिशिंग करो भाई बनना नारुतो का jutsu कर दे भाई, टेलीपोर्ट। अरे रुको मेरे को इधर कहीं हार्पून गन दिखी थी। मैं युवराज मैं हूँ तेरे आसपास। युवराज या फ्यूरियस भाई जो भी था, मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे। मैं अंधा हूँ,
मैंने जस्ट कर रहा हूँ। देखो यार मैं कहाँ से आया था यार, मैं जहाँ से आया था, जहाँ से भी मैंने वहाँ पे एक चेस्ट खोला था जिसके अंदर से एक हार्पून गन निकली थी। या फिर नो किसने मारी आप दोनों में से? मैंने अबे यार जेलीफिश मुझे प्रॉपर मिल गई, मेरी हाथ बड़ी शैडो प्रॉपर। हाँ मेरे को दिख रहे हो, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ओके लाइफ बेकार है फिर भाई। शैडो प्रॉपर मिली, जेलीफिश मिल जाएगा। मेरे को भी प्रॉपर जेलीफिश मिली मेरे को भाई। मेरे को P90 मिल चुकी है, मेरे को शैडो प्रॉपर नहीं मिली है। फ्लॉपर ब्लू यार, शैडो फ्लॉपर। लेट्स गो क्लच लेट्स गो। आजा लेकर। फिर कहाँ हुआ? तू फ्लेम को दे दे। क्यों? आप मिशन तो फ्लेम आपका पास है। में ना, फ्लेम पास में तो उसको दे, वो मेरे को देगा। मैं भी फिर आपके तेरे पास में हूँ। आता हूँ। अच्छा तो आजा। मेरे पास शॉटगन लॉन्चर है। आपकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चला। हाँ, ये रहा साइड में लो। मैं अंधा हूँ, मेरे को नहीं दिख रहा। मेरे पास में आओ फिर निकल जाना। ब्लू लेवर पड़ी है यहाँ पे। मेरे पास में रहो ना, दूर मत जाओ, मेरे पास रहना है, एनिमी के पास रहना है। कितने टाइम तक? 3 3 सेकंड। सेकंड। और फेस करो एक बार। आप फेज होते रहो, मेरे आसपास फेज होते रहो। फेस कैसे होता है? फेस कैसे होता है? अच्छा हाँ यही जो कर रहे हो। हुआ? हाँ वेरी गुड। अम्मा दोस्तों ये नहीं आया, क्या बोलते हैं उसको? मिशन नहीं हुआ? हाँ मतलब अभी तक कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं आया मिशन का। एक्सपो मिली है? एक्सपी नहीं मिलती ना इस सेशन से। अच्छा चलो हो गया होगा अभी तक तो। अरे मैं करो 2-3 बार करो। फिर से कौन नहीं है, मैं क्या आराम से रहना। 2-3 बार करो फिर से उसके साइड पे फेस, वो पता नहीं अगर हुआ कि नहीं ना। खत्म भी हो गया उनका। नेक्स्ट मैच में कर लेंगे। और नहीं हुआ होगा। मार जाएगा आपने उसको? नहीं तो तू आ गया। अरे तू कहाँ पे? अरे नहीं मारा। हाँ मैं भी। भाग पास में आएगा तो मार देंगे अपने को। फ्लैश बन के निकल ले भाई, फ्लैश बन के निकल ले भाई। कैसे दूर फिर से आप डर गए थे क्या? फिर से आप डर गए थे क्या? नहीं मैं डरा नहीं था, तो मैं बैन से डरा हूँ, याद है? किससे? कॉमन पिक्सल जल्दी पे शैडो प्रॉपर नहीं मिली। बाहर अच्छा। देखो तुम लाइक दिखा। अच्छा दूर रहे थे फिर। इतना अरे अच्छा मेरे वाला पास अकाउंट गाड़ी मेरे क्या को नहीं बात आ करवाना रही है? मेरा। अच्छा लाइट बेकार है यार। मेरे को फिर से P90 गाड़ी है आसपास। भाई अच्छा तो पूरा अभी लाइट छुप के ही खेल, बेकार है यार। लास्ट तक तेरे को लेके जाएंगे। मैं क्रेन में छुपा हुआ हूँ। भाई मेरे को पिन दे देना भाई, सही में बहुत बढ़िया होगा। सोलो वीडियो कर रहा हूँ मैं। देख तू है ना, घास में छुप के रहे लास्ट तक। अगर घास तू में जीत, नहीं हूँ मैं, हाँ, क्रेन में हूँ। अच्छा कहीं पे भी छुप, बट छुप। और लास्ट में क्या होगा देख, लास्ट में हम लोग अगर बचते हैं और तू बचता है, हम 3 बचते हैं, तो तेरे और पता ना मुझे समझ रहा हूँ। मेटल प्लेयर के 1v1 में डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा ये मैच, समझा? अगर मेटल प्लेयर जीत गया तो तू वैसे भी मर गया, अगर तू जीत गया तो मैं खुद को मार दूंगा। पर मेरे को फिर मैच चाहिए होंगे इस मैच के 1v1 के लिए। मैच की जरूरत नहीं, मैं नीचे ये फॉल डैमेज लेके मर जाऊंगा। नहीं बट मेटल से ऐसे करने चाहिए। नहीं वो तो तुम्हारे तुम ये लोग के बात। ऊपर है ना। तू वो तो वुड दोनों बॉक्स के में मैच क्या देखो था? तुम लोग, और मतलब तू वुड बॉक्स में क्या? दोनों भी मैच काम करते रहो साइड में। ट्रोल कर रहा था, मैं ट्रोल कर रहा था। गोलियां मार दूंगा, इतनी मोटी वाली गोलियां मारूंगा। भाई मेरे पास बंदा है, प्लीज बचाओ प्लीज। नहीं बचाने के लिए नहीं आएंगे हम लोग। 15 का डैमेज दिया है, 15 डैमेज मैंने दिया पर पिस्टल तो पागल है। पर फुटस्टेप्स से आ रहे मेरे को। मर गया। एक बंदा ग्लाइड कर रहा है। देख मारना 15 चालू कर उसको। जोन में चल पहले। ये बंदा बहुत दूर है, उसका बंदा नहीं है, मैं मार रहा था। अरे वो मैं निकाल रहा हूँ। नहीं वहाँ पे मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। बंदा ग्लाइड कर रहा है। फिर अगर मैं इमोट हो गया, बस मारना मत, मैं आपकी साइड में ही आ रहा हूँ कहीं पे तो। मेरे पास है एक बंदा, मेरे को ग्लाइडर की तो आवाज आई थी बहुत पास। फिर से मेरे को बचाओगे, मेरे पास दुओ है पूरा। हाँ बस उनको थर्ड पार्टी करो, मैं वहाँ से निकल जाऊंगा। उनको बस थर्ड पार्टी करो, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। इसे अगली बार बताया करो ना जो वापस बंदे। अरे पूरे से मेरे पास स्पैस है, स्पैस वाले बंदे, मैं स्पैस आपको दे दूंगा, बस मेरे को बचा लो। भाई फेस का काम नहीं है भाई, फेस कर 4 साल। अरे किसने मारी मेरे को रेल गन? मैंने मारी, मजाक छोड़, मैंने नहीं मारी। ये फ्यूज है, ये इसी फाइट में क्या? मैंने तो क्रैश और मैं लड़े। बाय शिट।
वो ड्रैगन ब्रेथ। शिट मेरा बदला लो। मार दिया तेरे को लॉल। चलो फिर तो आपको कॉम्बैट पे चलेगा, मैं ड्रैगन ब्रेथ बता रहा हूं। हां उठा ड्रैगन। अरे आप लोग कहां हो? कॉम्बैट पे चले पीछे हम जिंदा है। नहीं कहां हो पर आप लोग उस बंदे से नहीं लड़ रहे थे जिससे मैं लड़ रहा था। मैं मार रहे थे एक और दो के भाई वाओ मैं तो आप भी उसी फाइट में हो। वो बंदा आ रहा है हमारे पास। मेरा बदला लो अब। फिर भाई बोल ना। दोबारा स्ट्रीम स्नाइप करूं? ओके मिशन तो क्या आपके फ्री में मेरे साथ। यहाँ पे बंदे लड़ रहे हैं बहुत दूर है। नजदीक आ रहा है। ये कैडी वाले मिशन होंगे क्या? हाँ वो 80 का अभी यहाँ पे भाई हमेशा आई थिंक 100% स्पॉट एक समय बाउंटी लगा हुआ है। बाउंटी लगा चला नहीं कैसे ये चल क्यों नहीं रहा है? R2 चलो अरे वो कीबोर्ड माउस पे ग्लिच है क्या? वो जॉर्डन के साथ हुआ था। अब भाई मैं आप लोगों को स्पेक्टेट नहीं करवा रहा स्पेशली बॉट को। चल लगा फिर से मैं दोबारा वो करूं क्या? अरे पानी में ये होता है। हाँ कर। इस बार मैं असली वाला स्ट्रीम स्नाइप करूंगा। वो वाला एनिमी वाला चलेगा। मैं ला रहा हूँ कैंप करूंगा एक जगह पे जहाँ से आप निकल रहे होगे और आपको एम बॉट मेरी 80 के पैसा मारूंगा 80 के लेके आ रहा हूँ मैं कुछ भी हो जाए। भाई इधर किसी ने कुछ बिल्ड करके रखा है या गेम नहीं बिल्ड करके रखा है? आपके आसपास कोई नहीं है आपके आसपास कोई नहीं है। यूरज भाई प्लेजेंट में बंदा है। नाइस। डॉन ये नया पीओ आया है देख। ये देखो फिरोज भाई उन पीछे देखो। अरे फिरोज भाई मैं बॉट को स्पेक्टेट कर रहा हूँ मेरे को आपको करना है। तुम मेरे कौन कर रहा? तेरे को ही कर रहा हूँ। क्लेम भाई 2527 ये देख आप देख। नहीं मैं देखूंगा मैंने वो बंद किया होगा भाई। एक काम कर तू मर जा ताकि मैं फिरोज भाई को स्पेक्टेट कर लूँ। फिरोज भाई अपना एनोनिमस मोड ऑफ कर दो। ऑफ है शायद मेरा। 80 के लिए आया मैं जोन में। ऑन है मेरे को एनोनिमस दिखा रहा है भाई। 80 को कितना बुरा ठोकता है तू। शान में देखा भाई मेरी स्क्रीन में युवराज इतना ग्लिच हो गया ना। मेरी स्क्रीन में इतना बुरा ग्लिच हुआ है ना। क्या हुआ? मर रहा हूँ ना मैं मेरी स्क्रीन। तू क्राउच करके अपने हाथ को पीछे करके चल रहे और सब कुछ कर रहे। आजा अंदर आजा। अगर आप इस मैच में मरते हो तो मैं आपको अगले मैच में डोनेशन दूंगा 5000 मरना है मतलब? हाँ ओके चलेगा। रेस्ट इन पीस फिरोज। नहीं कूद के मरना है जाओ कूदो मरो। इनको मरना है ना नॉक होना है ना मतलब नॉक नहीं पूरा रिबूट का तक। ए शेक डाउन बेचारा युवराज मेरे आंखों के सामने ये बॉट से मर गया। अभी तक वो ग्लिच चल रहा है प्रो। पीछे नहीं ऊपर बाहर किल कर रहे हैं। मैं नहीं सिखा रहे 150 हर्ट्ज इसका फॉल डैमेज मिल गया शायद से। मेरे पास एक मैं ये रीस्टार्ट करूँ YouTube ताकि आपकी करेक्ट टाइमिंग मिले मेरे को रेडी करने की। युवराज तू रेडी कर देना फिर शुरू से जैसे आप करोगे वैसे ही मैं रेडी करूंगा ठीक है। युवराज के करने के 2-3 सेकंड बाद ही करना। भाई वो बंदा आपसे डर है आप 13 HP हो। उसको तो थोड़ा ना पता है कि ये 13 HP वो 7 HP है उसको ये पता है। अबे स्पेक्टेट कर। अब वो 57 है और आप 63 ज्यादा फर्क नहीं है। अरे बैंडीज है उसके पास तो पॉप करता कि पूरे मेरे को मार लेता। इसके पास 150 अरे फिर जिसको मैं स्पेक्टेट कर रहा हूं उसके पास 150 गोल्ड है। वाओ वो ऊपर बैंडीज पॉप कर रहा है और आप नीचे मेडकिट। वाओ अब इनको ज्यादा हिट होगी ना मतलब 15-25 और हेल्थ एडवांटेज है आपको और गोल्ड का भी है। उसके पास भी गोल्ड स्पैस है। मेरे पास मैक्स नहीं बस फर्क है। मेरे पास मैक्स नहीं उसके पास मैक्स है। उसके पास 500 200 250 क्या इतना फर्क है कि मैं आपको स्पेक्टेट कर रहा हूं और आप एनोनिमस मोड ऑफ करो।
और युवराज को रिबूट नहीं करना, आपका डियर है। रिबूट करना तो ऐसा किया तो आप प्रो बन जाओगे, बॉट नहीं। तो मैं बोलता अगर मेरे को रिबूट किया तो फिर वो आप प्रो बन जाओगे बॉट में। रोनित महेंद्रू, यो व्हाट्सअप, वेलकम टू द स्ट्रीम। तो फ्यूरियस भाई का डायलॉग है, P90 उठा लो, हार बन छोड़ दो। Yo Ronit20, welcome to the stream. Make sure you like and subscribe if you are new to the channel. अरे भाई मैं उल्टा फिर रिबूट नहीं करना। मैं भूल गया था रिबूट करने की कोशिश मैं करूँगा आगे जाके 5 सेकंड रिबूट कर भी नहीं सकते बाहर। Yo Ronit Mendru, welcome to the stream. वाओ Make sure you don't like and subscribe to my channel. समझ में आता है रोनित? ओके समझ में आता है। रोनित के मैच में जाके इनको स्ट्रीम टाइप करने की कोशिश की पर नाकाम कोशिश के बाद मर गया। मेरे को नहीं दिख रहा है ना, ये देख रहा है। मैं आपको देख रहा हूँ। नहीं ये वो देखे ना देखे, मैं देख रहा हूँ। फिर से आपके पास मैच है, क्लच कर लो। Why would I subscribe to you, Wobble? Because I am so bad at this game that I died, and he's still alive. Even though we were on opposite team, he survived and I died. So that's why you यार ये क्या यार क्यों डालते हैं subscribe to my channel. क्योंकि आप यूज करो। फिर सही फॉल डैमेज से मर जाओ मैक्स साइड पे जाके जितनी जा सकते हो। सारे मैक्स यूज करो फिर फॉल डैमेज से मर जाओ। ओए इधर कैसे डैमेज ही आग फॉल डैमेज वो एक स्नाइपर होती है। मर तो रहे हैं ना। फिर तो आपकी बेइज्जती करे आपका टीममेट। भाई उसकी मर्जी है भाई। ड्रैगन का तो तेरे पास सीधा शायद से युवराज नागपाल नहीं मेरे पास नहीं थी। हाँ मेरे पास थी पर मेरे उधर लूट पे ही पड़ गई। मेरी लूट पर वो अरे यार क्या बंदा रहेगा ये। तो फिर से मेरे को स्ट्रीम रिफ्रेश करने दो ताकि हाँ आप फिर से पहले ना युवराज पहले ना तू रेडी करना, उसके बाद फिर भाई आप जैसी रेडी करोगे मैं भी कर दूंगा। ओके अरे रे आगे स्ट्रीम में डिले है क्या? थोड़ा रहेगा। अब जब लॉबी में आओगे बताना। ओके अरे तू हमारी पार्टी में क्यों है? कि मैं पार्टी में हूँ। क्यों हमारे को स्ट्रीम साहब कैसे करेगा फिर लीव करूंगा ना तब अभी मैं देख रहा हूँ। एक मिनट अभी तक हुआ नहीं वो टास्क शायद। हुआ नहीं सर्वाइव स्टॉर्म सर्कल्स नहीं किया मैंने। ओके हाँ वो भूल गया करना। हाँ रुको अब युवराज रेडी कर देना फिर से जब आप रेडी करोगे तभी मैं करूंगा। दो ज्यादा फिर भाई डुओज ही है पहले ट्रियो का तो ये था पार्टी में। ट्राइजल था पार्टी में। ट्राइजल गॉन। यूरस भाई आपको पता है वो एम असिस्ट उसको भी इफेक्ट करता है बिल्डिंग को। कैसे? वो पता नहीं पर ना मतलब भाई क्योंकि ना बाकी सारी जो गेम्स है ना जिनमें एम असिस्ट होता है उसमें तो बिल्डिंग होती नहीं है क्योंकि फोर्टनाइट एक गेम है बिल्डिंग के साथ जो जिसमें वो गन्स भी है साथ में जिसमें एम असिस्ट होता है फोर्टनाइट। हाँ तो फिर उसमें बिल्डिंग के साथ से अभी कर रेडी। बेचारे का लॉल करना था हमने। रेडी कर बेचारे का लॉल करना था हमने हैं। वो शायद उसका मैच मेकिंग हो गया था और वो शायद और ऊपर से डिले भी है उसमें तो फिर वो सेम टाइम हो गई नहीं है ना।
टूना फिश वाले टास्क भी करने हैं मुझे, थोड़े थोड़े से। पहले कौसर आया बॉट को। कौसर क्या होता है? और बता यार, क्या किया आज? कुछ इंटरेस्टिंग हुआ कि नहीं आज लाइफ में? अभी बोनी बॉक्स में अपने को डायरेक्टली मिलेगा ना वो वाला गन, पर उधर सर्वाइव करना इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। हाँ बोनी बॉक्स चलते हैं, बोनी बॉक्स में तो वो साइडवेज अपन जोन है तो साइडवेज अपन भी मिल जाना है। हाँ मिल जाएगा, बट मर भी जाएंगे ना अपन वहाँ पे, अभी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ वो भी है। एक काम करते हैं, इधर जाते हैं, कॉर्नी जाते हैं, कॉर्नी। वो सर पर बैठ भेजो, सर पर बैठ भेजे थे आपने? नहीं नहीं आया शायद। नहीं प्रोडक्टिव था। नाइस। हेलो हमारे मैच में गया तो नहीं है ना? हाँ नहीं है। अरे भाई ये क्या हुआ? अचानक से लोडिंग स्क्रीन में चला गया। बैन हो गया मैं कह रहा हूँ। रेस्ट इन पीस अथर्व, रेस्ट इन पीस अथर्व। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा। 2020 to 2021 रेस्ट इन पीस अथर्व फोर्टनाइट अकाउंट। हाँ एक काम करो, आप दोनों जल्दी से मर जाओ फर्स्ट टॉम सर्कल के क्लोज होने के बाद। नहीं हम सारे स्टॉर्म सर्कल सर्वाइव करेंगे और फिर तेरा भी मर्डर करेंगे, तेरी लॉबी में क्योंकि मैं मैच में भी नहीं आया था और तेरा रियल लाइफ में मर्डर करेंगे। तेरे से बोला मैं तेरे मैच में मर्डर करूंगा। और फ्लेम वेटी जैसा बॉट मैंने आज तक नहीं देखा भाई, बार-बार अनरेडी कर देता है, क्या करूं मैं? मैंने अनरेडी नहीं किया, फिर मैंने बोलता अनरेडी नहीं किया। उसके बाद तूने दोबारा तूने रेडी नहीं किया उसके बाद? मैंने किया है, हिला हो गया ये थोड़ा सा। हम मैच में थे, मैच में थे। अच्छा ओके टाइमिंग की प्रॉब्लम हो गई। ये तो हम चट फ्लैश उठाए दिया, उठाए शायद, क्योंकि मेरे को आई थिंक दिखे थे चट फ्लैश आता हूँ लोग मिले। वो मेन बिल्डिंग में बंदे बंदा मैं क्या जा उस बंदे से मरो। तू अटक क्यों गया? मानो मैं गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, ऊपर वो बैठ। एक मिनट छोड़, मैं क्या तो क्यों जा रहा है उसके पास? तू मरेगा। अरे जाओ प्रो बनोगे आप। चलो निकलते ऐसा प्रो नहीं बनने का, मेरे को टास्क करना। हां चलो वो रिस्की है। जब मैं आपके मैच होंगे तब का टास्क कर लेना। इसी चलते फिर भाई ऐसा पागलों बच्चों के आवाज हम चीजें नहीं सुनते। वाओ रेसिस्ट। अरे चेस्ट खोलो तभी तो मिलेगा कि मुझे शायद मेरे शायद ये भी चलते हैं। अरे साइज भी चलता है, साइज उठा लो। साइड चलता है? हाँ वो साइडवेज है। बार पूरा ले ले अब पकड़ ले पीछे बंदे मार दे। तू बैन दो लोग हैं पूरा डाल दिया मैंने। फिर मर जाना मेरे ख्याल से आपने। अरे यार फिर खबर नहीं आती।
अरे इसको इतना अच्छा लूट कैसे मिला इतने जल्दी? क्या क्या लूटा? अरे रिस्की में काफी अच्छी लूट मिलती है। उसके पास रॉकेट लॉन्चर भी था और रुको, फ्लैश भी था। अरे मैं लीव कर रहा हूँ। अरे यार अभी तक नहीं हुआ वो साइड वाला। ये अथर्व ने अपना ये वेस्ट कर दिया अटेम्प्ट। रेडी। फिर से अथर्व को बोले कि हमारी हेल्प करे और एक साइड में से अपन ढूंढ ले जब तक हम वो नॉर्मली खेल रहे होगे। बराबर। अगर वो मैच में आ जाएगा। ये लॉक क्यों है? ओ भाई सब करेंगे क्लेम तब ये अनलॉक होगा। वाओ भाई। इतना स्ट्रगल यार मैं नहीं कर रहा, छोड़ो। वैसे भी उतना खास नहीं। इतने खास एडिटेबल स्टाइल्स भी नहीं है जिनके लिए मैं पागल जैसे पढूं। ये फिर भी ठीक लग रहा है थोड़ा, ये कर लेता हूँ। हल्दीराम। अरे चले गए हम लोग मैच में, सैड यार। रेस्ट इन पीस अथर्व 2020 to 2021। एक साल सिर्फ। एग्जैक्टली। बेचारे का फोर्टनाइट अकाउंट भी चले जाने, ये भी चले जाने। इस बंदे का फोर्टनाइट अकाउंट इससे ज्यादा कीमती था ना। ओ भाई रोस्ट कर रहा है तेरा। तो इसकी बर्थ डेट भाई, इसकी बर्थ डेट भी तो फोर्टनाइट अकाउंट एज होगी ना। सही बोल रहा हूँ। बेचारे 1 साल का था फोर्टनाइट अकाउंट, बेचारे का मर्डर कर दिया भाई। ये देखो ये सब बेकार इंसान होते हैं ना। कर दो, लीव अभी नहीं होगा, लीव नहीं होगा। वो तू स्ट्रीम स्नैप में फेल हुआ तो वो हमारी गलती नहीं। एक और बार छोड़ी था उसमें हो गया। रिस्की चलते हैं इस बार, रिस्की से हम वो चल रहे हैं या फिर इधर बिलीवर्स में ही जाते हैं। उधर पास। हाँ बिलीवर्स हम कहाँ पे? बिलीवर्स के पास में ही है ना वो। साइड में बिलीवर्स के पास है। मेरा ड्रॉप खराब कराएगा ना अगर ये स्टोन बाइट में मेरा ड्रॉप खराब हो। मैच का थोड़ा गोल्ड स्पेंड करना, आप मिशन कर लो इस मैच का, अनलॉक हो जाएगी आपकी कोई। वो ऐसा सुनो भी ले रहे हैं वो गोल्ड ग्राइंड नहीं करते, गोल्ड वेस्ट करते हैं। गलत बोल रहे हैं। हाँ थर भी वेस्ट करते हैं, पर मैंने ऐसी बकवास की अभी तक। मेरा ड्रॉप यार सर तेरी को इनवाइट भेजने में खराब हुआ मेरा ड्रॉप। तूने नाम अथर्व वाइटी क्यों नहीं रखा? अरे ये ऑलरेडी बस्ट ही मिलना था इनको, बस्ट नहीं होता तो मार। मर गए? नहीं ये नहीं देखा क्या कि इंसान में है क्या? चला गया। मैं फाइट में हूँ। इसमें हमारा मैच है क्या तुम? नहीं शायद होगा, क्या पता। भाई एक बंदे ने मेरे लिए गोल्ड फायर में अपग्रेड किया अपनी शॉटगन और मैंने मार दिया। कॉम्बैट शॉटगन बेटर है या ग्रीन पंप बेटर है? गोल्ड कॉम्बैट ग्रीन पंप? पर्पल कॉम्बैट या ग्रीन पंप? भाई इस बंदे ने काश गोल्ड में अपग्रेड किया। पर्पल कॉम्बैट गोल्ड में तो नहीं, मैं अगर थोड़ा और वेट करता तो मेरे को पर्पल स्कार मिल जाती एटलीस्ट। बेचारा बंदा YouTube चैलेंज करना था यार, शर्म ना आती है सर। YouTube चैलेंज कर रहा था भाई, वो फ्यूज भाई की तरह अच्छा क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहा था, बेचारा चैलेंज खराब कर दिया। देख रहे हो भाई फिर इसकी इस लोगों की वजह से लोग गिव अप करते हैं फोर्टनाइट में। लोग चैलेंज वीडियो ही नहीं बनाने देते।
बंदे लोग डॉगी वाले क्या बोल रहे अभी? बंदे ने भाई वो किसी बच्चे का चैलेंज खराब हो गया फोर्टनाइट का, आपकी तरह बड़ा क्रिएटर बनना था उसने। नहीं, बंदे ने उसने challenge भी खराब कर सीजन के दिया। एंड होने की वजह से अपना गोल्ड खत्म चैलेंज करना कर था। रहा था तभी तो चैलेंज कर रहा था उससे, वैसे ही करना था चैलेंज कर लिया, वीडियो में व्यूज मिल जाते। अच्छा हमने सब कुछ खराब कर दिया, बहुत जिम्मेदार इंसान है तू। तो बस इसलिए सारे बच्चे तेरे को बहुत गधा बोलते हैं। मैंने 1v2 कर दिया। तो बोल रहे थे कोई नहीं पूछा कुछ। तो नहीं बहुत इंटेंस फाइट है। अच्छा चला रहा हूँ जिस पे। अब वो हेल्प किया फिर भाई? नहीं आ गया। कहाँ पर अंदर? अब मुझे नहीं आ गया। मैं अंधा हो गया फिर आपने सारे बंदे मार दिए। अकेला ही था। अकेला ही था। सारे मेरे को बेचारे पे। बस का ये तो बस गिरी उधर। डेड एक और। नाइस। तू भी नहीं मरता यार, तू भी मर गया वही सुसाइड ले। भाई ये बंदा बहुत बुरा मारा है, बेचारे ने रेड शॉट कर दिया है। कूद जाना उसको तो अपने आप को भी बताओ, दोनों कूद जाएगा तो मजा आएगा, मिल जाएगा वरना मत करो तो यार। मैं गाड़ी में टायर नहीं है। आ गया मैं इंस्टेंटली बस मेडिकेट से आपको ले दूंगा एक। फिर से एक फ्लॉपर ऐसी पड़ी और मेरी 3 एचपी कम है, खाऊं? खा ले, वैसे ही पड़ी हुई है ना वो। बंदा वरना वन पंप कर देगा बेचारे को। वैसे भी मेरी 5 शील्ड कम है मैक्स से। बेचारे को उनको बोलना है ये वन पंप होता है। तू बहुत है, मेरे को बताया, बता मत। यहाँ फिर इधर मेरे पास एयर एमो कम है, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मत ऐसे वो एक ऑप्शन है। मैंने अपने 22 गोल्ड को स्पेंड करके ये चीज खरीद ली जिसका नाम है मेरे को है जिसका नाम है फिर वो कट ऑफ ही हो गया बंदे का, इंटरनेट ही चला गया बेचारे का। चला गया जिसका नाम है नहीं जिसका नाम है यार इधर आ, स्प्लैश है इधर। मैं कौवा को मार रहा हूँ ऐसे, मुझे मैं कौवा कमीशन हो गया। नहीं वो आ रहे। अच्छा हुआ याद दिला इसने। चल जल्दी। वहाँ पे लॉन्च हो गया हुआ मैंने, और मैंने यहाँ पे तेरी मौत। मैं तेरे मैच में ऊपर। Do you know I was faking मैं तुम्हारे मैच में लॉन्च पैड कैरी करना। 3 किक है तो मेरे को दिखा। ओह यहाँ पे लॉन्च पैड ऑलरेडी लगा, किसने लगाया दिया था? लगा दिया मैं था। 10 मिनट बाद बता रहा था। बस यार मेरे को तो 3 किल तेरी किल फीड में नहीं आई भाई। मैं तुम मतलब 10 सेकंड बाद बता रहा था। I am heading towards Believer Beach. ओ बिलीवर बीच में जोन है ना फिरोज भाई? बिलीवर बीच में जोन नहीं है। अरे यार उसको मजाक हो, उसको मैंने उसको टच करना था, अगर ये सच बोल रहे हैं बोल रहे नहीं वो मजाक कर रहा है, वो नहीं है मैच में। पता है है वो नहीं मैं उसको ऐसे मजे में टच कर रहा ना वो कुछ तो है हम निकल गया। और दड्डा आग दूंगा यार रुको, मैं अभी बिलीवर बीच नहीं आ रहा वैसे। अब मैं जा रहा हूँ पिरामिड। उधर अब मैं हूँ पिरामिड में। ओ भाई तो पिरामिड में जोन है ही नहीं। वाओ मैंने खोल दिया वो जोन। क्या काम है? दिखाना आओ आप ले साइडवेज निकल रही आ रहा हूं निकल रहा हूं। अरे मैं जोन से रोटेट कर रहा था, मेरे बीच रास्ते में पिरामिड पड़ा, मैं इसलिए साइडवेज उठा लिया ना।
हाय कॉल करो तो अरे फिर से मिल रहा वो नहीं, मेरे पास एक साइडवेज वेपन है। फिर से वो नहीं मिल रहा। हाँ चलेगा। हाँ जो मेरे पास एक साइडवेज वेपन है। फिर भाई और हाँ जब साइड रुको बंदे मार। 40,000 का साइकिल मिलता है, आपको 50 साइकिल मिलता है तो 3 मारोगे आप साइड से। मैं मर गया इस दुनिया में। वाओ प्लेस डाइड ऐसे कुछ आया ही नहीं हमें। Because this is not Minecraft. This is FN. फिर तो एक काम करो, कूदो और मर जाओ, फिर मजा आता है। नहीं आता ऐसे मजे मेरे को नहीं करते यार बहुत मजा आता है, मतलब आप रॉकेट राइड कर देते हो अपने अभी। मैं साइडवेज अटैक को मार दिया मैंने पूरा ये ले लिया। मैं चैट में कुछ लिख रहा हूँ। नहीं ये बैन कर दो उसको। और ये ओपी लूट मिल गया। अब ले आ रहा हूँ मैं ओपी लूट के। आजा आजा जल्दी जल्दी, टैक्स जोन भी आ रहा है। अभी आ रहा हूँ। अरे लेजेंडरी जा और कोई नहीं, मैं नहीं उठा रहा हूँ मेरे पास फ्लेम नहीं है तो बस इधर नो मैं बॉस ना मुझे उनको बात तो मैं सिर्फ ऑफ करूँगा। आप छोनी छाप जाओ। थोड़ी देर में सो जाऊंगा। नहीं भाई नहीं पूरी रात जाग भाई, नहीं मजे कर पूरी रात जाग, स्कूल बाहर में जाए समझ में आता है। फिर भाई आपको छोनी छाप से मारूँ मैं के बॉक्स से। अरे लो आप स्काइप चल जाएगा ना? क्या चीज चल जाएगा? साइज चल जाता है। हाँ हाँ साइज का एक चीज, आप अगर क्यूब वाले मॉन्स्टर को मारो ना तो आपको 50 साइज मिलेगा साइज से। मेरे पास आपको लेजेंडरी मिल जाना है। आओ यहाँ पे आपको लेजेंडरी मिल जाना है। कैसे नहीं जान क्यों निकलते जोन में। मेरे पास बहुत ज्यादा क्यूब वाले पार्ट है, मैं आपको दे दूंगा। फिर मैं स्टार्ट नहीं पढ़ रहे क्या? पढ़ रहा हूँ ना, टाइम वेस्ट करने का बहाना उस मेरे पास आपका बेसिक बनाने के लिए पार्ट। फिर से करो। अब पहले आप वो जोन चल रहे थे, फिर मैं आपको पार्ट दे दूंगा क्यूब वाले। फिर से चल लो, जो मैंने लिखा है करो। ओके डियर है, मत करो ये मरवा देगा हमको। मैंने इनको डियर दिया है कि स्काईवेज करें। उन्होंने तेरे को मॉडरेटर बनाया यूजलेस से तो नहीं। अब करना पड़ेगा फिर से करोगे ना? नहीं अरे थोड़ी देर के लिए कर लो ना, छोटा सा रे, ये डेयर बहुत बड़ा है। अभी फायदा नहीं है, स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, अभी फायदा नहीं करेगा। हाँ अभी वो मैच है हमारे पास। अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा यार, बस आप नॉक हो जाने चाहिए इतना बड़ा। आप नॉक हो जाने चाहिए इतना बड़ा बना। फिर से करो ना प्लीज, मैंने इतना दे दिया आपके मिलियन के लिए वो पार्ट दे दूं आपको? नहीं रहने दो, जोन में चल अभी यार, अभी करना थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। नेक्स्ट मैच में ट्राई कर सकते हैं। हाँ नेक्स्ट मैच में तो मैं भी खेलूंगा, मेरा वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। फिर से आपको स्नाइपर आऊंगा, कमीशन हो गया होगा फिर से, या मर जाओ। नहीं है ऊपर जा रहा हूँ। इसको से निकल गया स्नाइपर आऊँ। आपको वो पार्ट दे दूँ। एक सेकंड वेट करो, यहीं पे वेट करो। मेरे साथ ड्रॉप हो जाए, आपको वो मैच सुना लो।
ओके मिथिक हो गया। किसी क्रैक के बंदे को यहाँ पर किस और के है बोलिए। फिर स्ट्रीम पे 10 सेकंड का डिले है। तभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो यहाँ आपने जानबूझ के तो नहीं डाला? नहीं ताकि छोटा भाई इस 90 का ये सब लोग होंगे यार। ना मैं सफर को बड़ा एक और बार करेगा वहाँ पे मैं रिबूट हो गया बोला नहीं पता। अरे इसके पास ये चीज है रे। तो फिर रिबूट उठा लो अगर उठा सकते हो। अरे यार मैं आ गया अभी। हाँ वैसे भी रिबूट होना चाहिए नहीं चाहिए। देखो देखो स्टार्ट और फिर अब तो बता दो इसे क्या करना था। वो बंदे को शील्ड देते हैं 2 सेकंड में। अरे युवराज मैंने डेयर दिया था फिरोज़ाई को कि स्काईबेस करने के बहाने में युवराज को हाइट पे लेकर जाओ और मार डालो। मैं क्या ट्रीट कर रहा था तो बोलो तुम दे। हाँ नहीं तो ऐसे क्यों कर रहा था? क्या ट्रीट कर रहा था? क्या चैट ट्वीट क्यों कर रहा था तू? मेरी फोन में आएंगे ना? शायद एक सेकंड चेक कर दो। मार्क करने के बाद उनको एक बार मार्क करना। नहीं है तो। वो फोटो लंबा करे बहुत जगह रहा। ओ भाई साहब जी लेजेंडरी हो रही है। पर आपको ओ मान शूट ऑन कर दो इससे। आगे यहाँ से वन पंप करके दवा को साइड अरे वाह भाई लीव दो 18 तो है ना पार्टी में। युवराज तेरा जुबान डाली तूने कहा वन पंप कर देगा और कर भी दिया। हाँ तूने कहा वन पंप कर देगा और कर भी दिया। मेरे को पता है मैं मैच करता हूँ। मैं मैं लास्ट मैच है उनके पास 88 हेल्थ था तो अगर उनका 20 प्लस करोगे तो 108 हो जाएगा। सब 5 प्लस करोगे तो 113 हो जाना है। तो और ये वन पंप होता है और पंप का गोल्ड पंप 116 हाँ तो वो मरना था वो भी उन्होंने। टास्क ही कर रहा था बंदा जो स्काइप लेके आ रहा था मेरे पास। रेडी करो जल्दी मैं लास्ट मैच मेरा। आपका वो मिशन हो गया साइडवेज स्काइप वाला? अभी साइडवेज स्काइप यूज करके करना है। स्काइप क्यों बोल रहे भाई? साइड होता है स्काइप। आप पेज 2 क्यों अनलॉक कर रहे हो? पेज 2 तो ग्राइंडर्स अनलॉक करते हैं। पेज 2 तो मेरे जैसे ग्राइंडर्स अनलॉक करते हैं। हाँ मेरे पास भी पेज 2 है। मैं डील डैमेज टू प्लेयर्स विद साइडवेज साइट। अरे रिस्की कूदा रिस्की में काफी चीजें होती है महंगी। रिस्की में तू भी नहीं तू आता ना रिस्की में। रिस्की में को तू अच्छा लगता। फिर से इस सीजन मेरा ड्रॉप था रिस्की और बोनी बस। मैं और कहीं जाता ही नहीं था। ये बंदा गोल्ड ग्राइंड करते जा रहा था। बाउंटी नहीं मैं गोल्ड ग्राइंड नहीं कर रहा था। मैं वहां पे स्पेल्स लेने जा रहा था। बाउंटी ये थोड़ा पबजी स्टाइल स्किन है। बीजीएमआई फ्री फायर। अरे मेरे फोन पे कैसी परफॉर्मेंस आएगी बीजीएमआई की? अच्छी आएगी। कौन सा फोन है? आईफोन 11 आ जाना चाहिए। अच्छा परफॉर्मेंस आ जाना चाहिए। ट्राई करूंगा। तो बीजीएमआई मेरे फोन वाईफाई मतलब 5G नहीं है ना तो मेरे 5G इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता तो थोड़ा स्लो डाउनलोड है।
काम है लेजी करना है वहाँ पे, वो साइडवेज होना। अरे अब साइडवेज कर मर जाएंगे ना पर उधर। मशीन में। हाँ अब जाते हैं रिस्की उधर चिल बिल्ड करते नहीं कर हैं। पाएंगे। हाँ, साइड ढूंढो बस। और फिर भाई आप मेरे को वो गिफ्ट करोगे? क्या? गोल्ड पंप या पर्पल पंप या ब्लू पंप जो भी बेच रही होगी। चलेगा। तेरे पास तो मैक्स गोल्ड है, उनके पास 2600 कुछ है। मेरे पास मैच नहीं है। तेरे हाँ, पास तेरे पास मैक्स बाइक है। मैंने स्पेंड कर दिया था लास्ट मैच, मैंने आपको बताया तो था। नहीं किया था, तू बहुत है। किया था। फिर से प्लीज गिफ्ट कर देना, इसकी बात मत सुनो। मत करना इसके पास मैक्स गोल्ड है, तो सुबह ही बताया था मेरे को भी। अभी तो हम मैंने स्पेंड किया था लास्ट ही मैच सारा का सारा। इसने अभी बताया था मेरे को कि इसने वो नहीं, इसने चैट पे भी लिखा 5 के गोल्ड है उसके पास। और 5 के मैक्स नहीं होता। एक्सपोज डॉग 2 के एक्सपोज। मैक्स होता है। कुछ भी। मेरे पास 2600 है। अरे फिर से वन छोटे बहुत मारा मेरे को। इधर नीचे वन छोटे लिटरल वन शॉट। मेरे पास स्नाइपर है, 20 स्नाइपर है है मेरे पास। अरे 20 एक्स स्नाइपर मार दिया, वन शॉट नहीं था, 2 शॉट था। रेस दे दो, रेस दे दो। ये तो जूता है, उसको 2-3 शॉट मार तब भी नहीं मरा था। मैंने उसको ऑटोमेटिक स्नाइपर से मारा है, तू कैसे मरा? तू मरा कैसे भाई? मैं उसको ऑटोमेटिक स्नाइपर से मारा मैंने, बंदे को। तू उसमें से मरा कैसे? इसका रिकॉइल बहुत ज्यादा है भाई, ऊपर चलती रही। तो कॉम्बैट या नहीं सुनानी आती? नहीं बहुत है ये। हाँ One shot है वो। ये एम है। तो क्या करता क्या तू? हेलो जल्दी आओ। गया। वन शॉट नहीं है, बिल्कुल नहीं है वन शॉट। और भाई मैं वन शॉट हूँ बस, इतना मैं कह सकता हूँ। 5 सारे वन शॉट है, मैं एक सारे अच्छा वन शॉट है। ओके, मैं एक अच्छा। अब मैं तो नहीं। फिर उसमें यहाँ पे आना, वहाँ पे कैंप फायर है, यहाँ पे आ तो मिनी है, कैंप फायर है, सब कुछ है। फिर से मेरे को खरीद दो ये। नहीं मत खरीद के दो, वो पैसे लूट लेता है फिर से प्लीज क्या? मेरे को ये खरीद दो, ये जो चीज है यहाँ पे बिक रही है। ओके वेट, खरीदता हूँ। हेलो एक्सगेमर 2.20। If you fix 2 you get promo. I have 5.7k 2 subscribers. भाई मैं सच बोलूँगा, ये सब काम नहीं करता है। इससे चैनल फ्रीज होगा तेरा, और कुछ नहीं होगा। क्या होगा? क्या कह रहा है? वो बोल रहा है मुझे 2 सब्सक्राइबर दो, फिर मैं तुम्हें 2 देता। ओए मैं वेट नहीं मेरा 69 है, जब मेरी भाग नहीं है ये सब। लाइफ अच्छी है। फिर से खरीद दो ना वो जो बेच रही है। क्या? वो जो मेरे हेल्थ गैस कार्ड, ये NP69 है जो वो NP से बेच रही है, वो खरीदो। नहीं मत खरीदो। कहाँ पे? मैं दे रहा हूँ। कहाँ पे है बता। किधर है? मेरे पास आओ। स्लफिश खरीद लो। हाँ स्लफिश खरीद लो। स्लफिश ज्यादा महंगी है वो चीज से। इस बंदे ने बोला कि जो एनपीसी बेच रहा है वो खरीदो, उसने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि क्या एनपीसी बेच रहा है। खरीदो। खरीद नहीं पा रहा हूँ मैं, डन कर दिया तो भी नहीं हुआ कुछ। हाँ भाई यार, सर यार अनलकी। रुको मैं स्ट्रीम खोलता हूँ, आप करो। ठीक है देख। ओह नो, एनपीसी का मर्डर हो गया। किसने मारा? थैंक यू। ये ले। अरे वो ले लो। नहीं अरे वो दे दो ना प्लीज। मैं शॉटगन नहीं चलाऊंगा पूरे मैच अब। ओके मेरे को कुछ नहीं। गेट असाइड यू। अरे फिर से ले दो ना। ये ले चला। नहीं मत लेके दोस्त, भाई वो मर्डर कर देता है, अच्छा इंसान नहीं है वो। एक और खरीद लो अब युवराज के लिए। हम मेरे को नहीं चाहिए। देखो गोल्ड पैक इधर। क्या हो गया इसको? 0.1% लेजेंडरी स्कार मिल गया एनपीसी से बात करने के लिए, और हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मैं तो बोल रहा था गोल्ड पैक मिलेगी पर लेजेंडरी स्कार मिल गया। स्कैम हो गया मेरे साथ। मेरे पास अब बस 5 के गोल्ड है, बहुत कम है। फिर भाई जब मैंने आपको कहा था ना मेरा गोल्ड मैक्स नहीं है, मेरा 4988 था, मैक्स नहीं था यार। डॉग है यार, कल तुझको पता है।
अब अगर मरे ना तो गोल्ड वेस्ट होगा फिर भाई आपका, तो ये मैच जीत रहे नहीं होगा इनका। अभी हमने बाउंटी का मारा है, बाउंटी का मिल गया हमको। बंदा है ये स्काई ढूंढो। अच्छा वगैरह मिला तो मारा तो फिर उसकी पर्पल पंप फेरी आपको अच्छा तो पंप फेरी जाएगी। नहीं ओके चेक करो। अरे यार मेडकिट देना मुझे। मैं खुद मेडकिट दे मैं खुद 50 एचपी हूँ। वो खुद 1 एचपी है। ये करना है क्या? स्काईबेस करना है अभी? क्या बोलते हो? नहीं ना ये एनपीसी किसी बंदे को मार रही है, वो अपना टीममेट का। भाई मैंने किसी ने इम्पोर्ट कर दिया। फिर से मेरी है पर नहीं दूंगा मैं, मेडकिट नहीं दिया मैंने। अरे वो वन शॉट डेड। गुड मत नहीं बिग पॉट दियो और फिर से मुझे उनसे ज्यादा है। ओ शो और मैंने ले लूंगा मैंने 1 मिनट और दो 1-2 लो ट्रेड। वो गेम ना होती। अरे मेरे पास एक लॉन्च। और देखो नाचते बंदे के साथ वो चक स्प्लैश मारेगा। बंदे के साथ नाचते चक स्प्लैश मारते हो। किधर है? भाई अच्छा वैसा वो बंदा ओके। अरे वहां पे नाच बंदे रहे ऑलरेडी। जल्दी आओ। मुक्का मारूंगा तो सोचा कुछ और का मुक्का मारूंगा मैं। देख मैं सीधा मुक्का मार दे नॉकआउट। ये देख जूती मारी मुक्का मारा मैं तेरे को दा मार। मैं देखो जूती मार दी मुंह पे। अब एक और मुक्का मार दिया। तेरा छोटा वाला तू मर गया। तेरा पीनिस गया। अरे जल्दी इस एक चेकलेस हो और फिर चलो बंदे हैं वहां पे रेलिया चला। अच्छा एक चेकलेस हो करते दो जल्दी कर कुछ समझ नहीं वो मेरा। चल मारते अब ये बोल मारते हैं आप। लॉन्च करते हैं। मैच खत्म हो गया। एक एचपी डेड। मेरे पास भी कम है, मैं दे तो नहीं सकता। टेकिंग डाउन करेंगे इस मैच से। बाय बाय हो जाएंगे महंगा अभी हम। ओपी लूटिंग मेरे पास आ जाएंगे। मारने की कोशिश करें। फर्दर ट्रैक डेड। एम बॉट इज डॉग। बल मार लिया और तो नहीं है। वन शॉट 35 राइट। लॉन्च कर लिया, मैंने लॉन्च कर लिया। आ गया मारना जल्दी दे। आग भी लग रही है भाई इसके बाद मैच नहीं थे। पर लोग ड्रैगन पे स्नाइपर ले रहे हैं। ओ निकल इधर से। रुक फिर नहीं। कवर कर तू। कवर कर आ रहे वो लोग। ये क्या हुआ? नील्स नहीं कुछ भी नहीं। इधर मिनी है। क्या करता था? गोल्ड पंप ये ले लो फिर आपकी स्टैश। डेड है। मेरे पास आईसी जाता रहेगा। ऊपर मार रहा मैं करता हूं। आ वन शॉट। एडिट करे सर। और रचना रेस दो इसे। ये मेटल बढ़िया। नहीं कुछ भी नहीं। बैंडीज है। भागो अभी पहले। और एक बंदा आ गया है भाई। अरे ये बॉल उसके किसी का स्नाइपर एमो है एक्स्ट्रा। ऊपर है वो एकदम ऊपर है।
अरे वन शॉट। अरे यार किसने मारा मेरे को? अरे यार कितने बंदे आ रहे हैं यार अपने ऊपर? एक शॉट में रहा हमारे साथ। शॉट नहीं चला। पूरा सही था, तूने रिबूट नहीं उठाया। वाओ कोई ना जाओ। एक रिलीज सॉरी मिला मेरे यार, को। आपका रिबूट नहीं उठा पाया मैं। ये फोड़ दो, इसमें कुछ हील मिलेगा। अरे ये वो लास्ट मैच है। हम तीनों चाहिए। कुछ नहीं है क्या? अरे मेरे पे बंदा आ रहा है। अरे बोट आ रही है। इंडिया साइड आ रही है बोट। स्नाइपर एमो है तेरे पास एक्स्ट्रा? बोट है ऊपर ही रहो अभी तुम लोग। तो ऊपर गए कहाँ पे? इसके ऊपर बोट चला सकते हैं। वो किसी ने मेरे पास स्नाइप करने की कोशिश की और डॉच हो गई। हमारा बाउंटी हमारे पास आ रही है बहुत। ले इसको। मैं गया। और यार एक अच्छी था। मेरा तो पहले शॉट 98 पे लगना है। चलो बाय, मैं जा रहा हूँ। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। देखो रिप्ले भी दिख रहा है ये कैसे मर रहा है आपकी स्ट्रीम पे। फिरोज भाई, हाँ आपकी स्ट्रीम पे रिप्ले मिल गया मेरे को कि आप ये कैसे मर रहा है ये बंदा। आपका चैलेंज हो गया? देखता हूँ अभी। एक हुआ। ग्लाइड इन द स्मोकी स्टैक्स एट स्टीमी स्टैक्स, ये कर सकते हो। ओके चलो। अरे मैं तो परसों सुबह 6 बजे निकलूंगा वो उधर जिम कॉर्बेट। मुझे आ देंगे। तो रात को जल्दी आने वाला है। वो सुबह 6 बजे निकलूंगा। गाड़ी में सोऊंगा, मैं तो गाड़ी में सो लूंगा। मेरा तो कुछ नहीं आ रहा। मैं सैटरडे को सुबह 6 बजे निकलूंगा। गाड़ी में सोऊंगा 6 घंटा का, क्योंकि वो राइड भी है उधर। तो और मेरे को 6 घंटे सोना और मिल जाएगा। तो मैं सो के उठूंगा उधर। फिर उधर उठ के जो भी उधर करने के लिए है कर लूंगा। फिर रात को इवेंट देख लूंगा। हाँ सही प्लान है ना? अगर अगर उनका इंटरनेट भी नहीं चला वहां पे होटल में, तो फिर मैं हॉटस्पॉट यूज कर लूंगा। तो मेरा भी शायद से लास्ट मैच ही है। हाँ, मेरा भी लास्ट मैच है, फिर मैं भी जा रहा हूँ। कल मेरे को शायद से ना, मैं आपके साथ कल खेलूंगा नहीं। आई थिंक कल फ्राइडे है ना? हाँ सुरेश भाई, हेलो। हेलो सुरेश भाई। सुरेश भाई आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो हेलो। हाँ वो आपको बाहर से ड्रॉप करें, आपके पास यहाँ पे लॉन्च पैड, तुम आपके पास लॉन्च पैड करके अरे जाओ। यार पूरे अपोजिट डायरेक्शन में स्क्रीन स्टैक है। मैं आपको लॉन्च पैड से जा दूँगा। अब एफ पे चल गए थे। एएफ के था। अब कुछ वायरिंग लगी थी या फिर वो कुछ हुआ था ऐसे ही? नहीं एएफ के था। और बेस मतलब अपने जाते हैं लेकिन आप कहाँ पे लैंड हो रहे हो? मैं लैंड तो हो गया। मैं ये करके ले रहा हूँ। एंड वो ये रस्ट का वाइप खेलना है ये वाला बाई वीकली वाला। हाँ जी। अरे इसमें कैमोफ्लेज हो जाएगा। अरे स्किन तेरे को अच्छे से दिख रहा है क्या? मेरे को खुद को नहीं दिख रहा है स्किन अच्छे से। वो आप परफॉर्मेंस मोड पे खेल रहे हो तो नहीं दिख रहा होगा, मेरे को तो आप दिख रहे हो। अच्छा अब वहाँ पे लूट वूट कर लो, थोड़ी सी लूट पड़ी है वहाँ पे। पीछे से वेंडिंग मशीन जो भी है मिस्टी पे, अगर आपका साइड वाला हो गया वैसे आपका साइड वाला साइड वाला नहीं हुआ। अब फिर वहाँ पे मिस्टी में वो भी है साइडवेज वाला जोन, और जोन में भी है वो जोन। उधर हम वो टैरेट से मार लेंगे ये ज़ॉम्बी को, ज्यादा ही है उससे। वेपन मिल गया आपको ये टेस्ट कर दिया और ये अब करते हैं यहाँ पे आउटसाइड है उसे हेडशॉट भी मारने के लिए भी काम मिल गया। अटैक वाला पड़ा है यहाँ पे। वाओ पर्पल है। कोरोना हो जाए मुझे बात जल्दी जाए, कोरोना ना हो जाए। और अगर आप साइड से आ गए तो आपको साइड से मिलता है ज्यादा फार्मिंग होती है तो पर आपको साइड से ज्यादा मिलता है। हम भी आ गया। अरे मैं शॉटगन मिला ही नहीं शायद। अभी तो मन नहीं कर रहा है। ओके ओके आप साइड से अगर मारोगे ना वो ये ज़ॉम्बीज़ को तो आपको साइड से मिलेगा, ट्राई करो। मैं बाहर आ गया अभी। और अंदर आके एक बार स्पीड कर सकते हो खाली छोटे। क्या मारना है अंदर आकर? अंदर आके ज़ॉम्बी को मारो थोड़े से, उससे आपको ज्यादा सेकंड मिलता है ज़ॉम्बी को मारने से। बहुत जल्द ज़ॉम्बीज़ बहुत हैं ये साइड के सामने। 10 मिनट अच्छी नहीं है क्या? और वो कम भी हो रहा है ना ये भी है ना, मिले भी है ना। दोनों अच्छा बन गया, कम भी हो रहा है एक्चुअली। अच्छा बन गया। ये स्काई बेस कर रहे थे यहाँ पे बंदे, कर रहे होंगे स्काई बेस। रैप फॉर द गेम डेड। इसको साइड से रहने दे दीजिए आप यहाँ पर। बस ये हील रहने दे दो उसको, सिर्फ साइड से डैमेज दे देना उसको, एक ही होता है। और तो स्लिंग ये हील करेगा, मेरे को हील करने को स्टार्ट करो।
हाँ जी यहाँ पे एक बंदा आ जाओ तो हॉटस्टिक की सेटिंग की दिया हुआ है जल्दी और फिर ये सब वो और कर लेगा ये पुश कर लेगा ये उसका मेरे को कुछ यूज नहीं दिख रहा है साइड का अरे ये 50 50 60 80 ये ज़ॉम्बीज तो ज़्यादा डैमेज देते हैं ये 50 50 60 60 80 80 डैमेज देते हैं मैक्स 80 मैक्स है नहीं डैमेज तो दे रहा है बट मेरे को भी आएगा ना डैमेज हाँ ये क्लोज रेंज का वेपन है ज़्यादा ये मतलब वो सीधा मुंह पे घुस के मारना होता है आपका रियर होता है कि वो बंदा 1 पंप पूछता है आपको आपका चैलेंज है ना पर डील डैमेज टू ओपोनेंट 150 डैमेज मेरा भी है ना वो यहाँ पर तो यहाँ पे एक बंदा है जल्दी हो वो बार-बार टैग कर रहे हैं और उससे तो नश हो गया फिर बहुत अनोइंग है ये बंदा आप पुश कर बॉक्स कर उनको बॉक्स कर दिया ओके वो निकल गया उसको शॉक कर दे चलो ठीक है वापस आ जाओ मेरे पास है पूरा यहीं पे क्रैक है अरे भाई मैं बोट को टाइम कर दिया डेड मैं तो चलो हाँ साइड से मिला मैं वरना 10 हिट होता शुक्र है साइड से तो साइड कौन है क्या कौन हुआ बताऊंगी ये वाला आ गया पटने वाला आ गया मैं दोस्त जा रहा हूँ ना मैं बस तो सेम है थोड़ा मैं आराम खाऊंगा मैं एक ज़ॉम्बी मार के आ रहा हूँ मैं पूरा आ रहा हूँ अभी Johnny से ऊपर लगा गया फंड हो गया क्या आप हाँ बोनी वो से मैक्स फंड हो गया क्या बोनी में क्या बोनी में मैक फंड हो गया क्या वहाँ पे एक मैक पड़ा हुआ है ऐसे क्या पता हो भी सकता है वो कौन सा चेस्ट खोल लिया कौन सा खोली कॉस्मिक खोलते आजा ओके
तो केयरटेकर को भी मार सकते हो, मारना हो आपने। है उधर वो केयरटेकर। मैं समझ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आजा। ज़्यादा हिट्स नहीं मारने के, जितना हिट्स मारेगा ना उतना खराब मिलेगा। अरे वो उसका बटन होता है, मैंने हमेशा कंपनी में ज़्यादा ना वो ये लेजेंड वाला होगा। मैं साइड वाला लिया मैंने, वो यूज़ करूँगा मैं। ये है तो अगर होगा तो भी अभी यूज़ नहीं करता, अभी बीच बीच में कर दूँगा। और सप्लाई ड्रॉप हो गया। ये रॉकेट लॉन्चर है, ले ले। रॉकेट लॉन्चर नहीं यूज़ करना मैंने। ये भी एमो भी रख दिया। हाँ मुझे एमो चाहिए। हाँ एमो चाहिए। आप मिनी सेल कर रहे हो? मिनीज है मेरे पास 6। ऊपर एक मार रहा है वो। और यार मेरे को नॉक कर दे मैंने बंदे को। चलो अब बस आ जा। मार दो दोनों को। बिग पॉट मार। हेलो लक्ष्य, व्हाट्स अप? वेलकम टू द स्ट्रीम। बाकी लोगों को भी रखना है। बहुत सारे क्या? ऊपर है पहाड़ों में ऊपर है। ये बेटा ऐसे अरे वो इससे हेडशॉट मार। ओ भाई दोनों खा गया मैंने इसको। एक मरेगा जोन में, काफी लो है वो। अरे कोई पीछे से भी गोले छोड़ रही है। नहीं रो रहा इसका। दोनों मर गए क्या? मर गया वो। हेलो क्या? और एक टीम है। अब बॉल कौन? ये कैसे है? और यार
एक और नॉक कर देगा। साइड वाली वॉल। अरे यार पीछे वाली टकरो। पीछे अंदर आई। एक सेकंड तो वन है दूसरे वाले का मिलता पीछे को भी हम एक साथ सॉरी साइड में ओके ये वाला शायद से लो है। अरे यार ये घटिया चीज है ना। हाँ चलो अब मैं चलता हूँ वो अब कल साथ ओके चल चलो बाय बाय बाय। व्हाट्स अप वाओ सोया नहीं अब तक। अरे ये हुआ ही नहीं। डील डैमेज भी है क्या? वाओ गेट प्लेस हेडशॉट ये तो किया था मैंने फिर भी नहीं हुआ। Are you pro? No, I am not. Are you pro? नहीं नहीं यूज करता मैं स्नापू चाटू। कल रिकैप है मेरा। रिकैप क्या होता है?
Do exercise some restraint, Mr. Holmes. Find the who's and we'll handle the why's. Do exercise some restraint, Mr. Holmes. क्या है नया अभी? Mention that he has gift for me, something that once belonged to my. Find the who's and we'll handle the why's. Just look at this thing. Hey, Marbed. It's huge. It's a bizarre object, and yet oddly familiar. Did you just remember something? Yes. A room full of Fractured curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental, because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. अभी ये फ्रैक्चर्ड मेमोरी बनानी पड़ेगी वापस. Wood straight, smooth. I remember returning home with a pair of Acha. perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. क्या चीज देख रहे थे लोग? इधर का दरवाजा खुल गया है ना? हाँ, ये इधर का खुल गया है. बचा कौन सा है फिर अभी? नीचे का? It was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible. It must have been something else. हाँ, living. Oh, of course, that mortifying hoax presently taking up space in our front yard.
Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. कौन था around? It Mother was थी my क्या? mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. Magnifying glass. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. Lol. I remember other people joined us. कौन join किया? भाई उसका. Workers. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth Yeah, lies in the Rada. details. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Ah, yes. My mother's studio. She was an authenticator, and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact I remember is this cozy real or blanket. not? It still exists. Perfect. Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. Oh wow. ये उस टाइम के सबमरीन ये अपने ये है ना वो पानी के सूट्स. Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Which book? What can... Oh, Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. Please accept my deepest gratitude. ये बाप मरने के बाद का है शायद. संडे का. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. अच्छा ये Mycroft है. Officer Luciano J. Placido. Reliable and driven. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. चाबी है. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Carefully Maybe today's the day. Oh, Sherry. Dated 24th... ओह केस भी हुआ था इसके बारे में, मतलब उसके मदर के डेथ के बारे में. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the The best. so-called mummy of a I'd be Persian upset if princess. he fell into the wrong hands. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. कितना बनावटी काम किया यार. फटा हुआ डिप्लोमा. यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा का है. ओके उसका डॉक्टर ओटो का है ये. Clearly, it was deliberately torn. I wonder why someone would do that. The Tulpa. Studies in Tibetan mentalism. An impressive...
ओ भाई इसने टेस्ट सब्जेक्ट करके भी यूज किया है अपने मदर को। वो ओके, मतलब इसके जो मदर को हुआ है ना वो इसके इसके इसमें भी है उसके सिम्टम्स, और वो हेलुसिनेशन ये करता है, फील करता है। जॉन जो है वो एक उसका हेलुसिनेशन है। तो जो प्रॉब्लम्स इसको है ना मदर को हुए थे वो इसको भी होने वाला है आगे जाके। और इसीलिए वो शायद माइक्रोफ्ट है वो इसको ये कर रहा है, लाइक क्या बोलते हैं, इतना गार्ड कर रहा है, कुछ बता नहीं रहा है। Mycroft did not like the method of Dr. Otto and did not trust him. और भी लगेगा mental disease है, imaginary friend. My mother's struggle with mental disease could be hereditary and affects my mental rationality. इसीलिए जॉन ये नहीं होगा कुछ जॉइन। और कुछ बचा भी एक्सप्लोर करना। When you're finished here, can we build a wigwam from the blankets? Like in the good old days? 1852, Bingley, West Yorkshire. ये कौन है? This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found out and forbade us from using real weapons. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Wow. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. The full plate armour It of would Sir have been Robert thrilling Swanford. if it were actually I was told true. my father won it in a wager. Armour is armour, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you take it instead of your pistol. ऑटो के ब्रदर का लेटर आया है। Starting to remember something. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. ओके, उसका पाथ फॉलो करना है। The painting on the wall was slightly atilt. He stopped and straightened it. यहाँ पर है क्या चाबी?
Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. चाबी कहाँ है पर? It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? I think this is what we're looking for. मिल गई की. इधर ही छुपाई थी. We made it. So what's there? Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Single malt whiskey. Mycroft's favourite. Gifted by Queen Victoria herself. ओ भाई. Otto Richter. उसके फाइल से शायद. ओपन कहाँ से होगा? Otto Richter. Otto... This one is... Born to a respected family in Switzerland. Parents died of cholera. Remaining family is a half brother, Klaus Richter, unknown, last seen on Cordona. तो Cordona में आया था उसका भाई, मतलब जो भी था. शायद उससे ही मिलना है अभी जाके, उसका जो भाई है उससे. तो अभी उसको ही जाके ये करना रहेगा ना, ढूंढना रहेगा. To exercise some restraint, Mr. किधर था वो? सिटीजन्स का सिटी हॉल में था या यहाँ पर था? सिटीजन्स के बारे में कॉर्डोना क्रॉनिकल्स में सिटी हॉल में ही था शायद. सिटीजन्स लेटेस्ट वाला पीरियड. कार्डोना में था ना? कार्डोना आता है स्कालेडिया. क्या गलत कर रहा हूँ मैं? इधर नहीं मिलेगा शायद, कहीं और ढूंढना पड़ेगा. न्यूज़ वाले में न्यूज़पेपर आर्टिकल आएंगे ना?
मशीन खराब। To hide a stolen had with this woman? You have A Dogon statue from but help the whole. Of course. subjective truth being exposed. The means. After leaving Cordona, Sherlock, you Detected it with a magnifying. Next, visit the victims. Mother's breakdown upstairs. I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. I used this. हाँ हाँ आजा आजा अब तो मैं देखता हूँ क्या करना है। I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. We heard a noise. I can't recall of exactly what. And we didn't have a great view from behind the statue. ओ ये बुक्स ही है। Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. I heard a noise in the hall. Let's check it out. Sherry, look! We've got a parcel here. Hurry.
An invitation that comes with a mask. We can't miss this, Sherry. I'm waiting for you at Kurt. Northern Grand रोड कौन सा बोला उसने? टर्कोइस. अच्छा इधर. ओके. Hello. अच्छा इसमें ऊपर ही जाना है क्या अंदर? Hello. What's up? Nice to see you. ना अभी किधर है? Welcome, sir. I do hope you enjoy yourself. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right.
Oh, I heard the finale will be splendid. Can you satisfy my curiosity? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Do not distract me. It's not My easy to goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Cahors, is it a guess? Sherlock! Friend! I wasn't sure you'd come. Werner, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. Huh. You may be right. Then free yourself. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. Time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, and something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. My mind already operates at a far higher level than most. I struggle to believe anything could improve it. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next? Visit the victims? Ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill. Indulging in it, and far better things to indulge. CEO's abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. Gin. Yourself a... I am perfectly capable of coping. I am perfectly capable without medical assistance. Then I shall press you on it no further. But do not refuse my gift. Take it with you as a souvenir of this special night. Souvenir of what, exactly? But, all right, if only to put the matter to bed. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Library. ये है ना library.
Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. These medieval botany and chemistry books look even more satanic than the occult ones. Do you know what was here before Manchiosa's family? Magic circle. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. And you still need a crack, despite being ethereal. Give me another second. Can you satisfy my curiosity? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Nanchio's had to enforce the masks after the scandal. Nanchio's had to We've got to fall back, Sherlock. I think they're suspicious. Or they were checking you out. Nanchio's had to Nanchio's had to I'll pin them down with this scoop. Thank you, Sherlock. Let Fabio speak for himself. My husband thinks I am playing bridge here. One of these books must open a secret passage. I know it. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. शायद उसके ऊपर क्लिक करना है to write an exposing local elite. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. These medieval botany and chemistry books, romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. These medieval botany and chemistry, romantic poetry and Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? किधर से मिलेगा दरवाजा रूम का? One of these books must open a secret passage. I know. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. With myself, fuse what? Please take the.
अरे मारा है किसी को? किसको मारा है? My God. Was he here this whole time? This crew tattoo partially covers as slave branding. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. This golden handle has a bloodstain on it. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. The wound is deep. A precise strike reached the heart. सही रे मस्त अच्छा है यार ट्विच सच्ची में मतलब अभी मतलब यूट्यूब भी है वैसा प्लेटफॉर्म बट यहाँ पर कैसा वो स्ट्रीम्स में उतना दम नहीं है ना जितना ट्विच पे है तो उनको अच्छा ये मिलता है। The victim has clenched the fabric so firmly in his Even fist that it's musicians now को अगर impossible to remove it. बहुत सारे डीजेस वगैरह भी है ना ट्विच पे लाइव स्ट्रीम करते हैं। This worm-like sigil has been drawn with his own blood. He died right here. माइंड पैलेस आया विक्टिम डिस्क्रिप्शन भी आया ये भी आ गया इधर। Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Pull yourself together, Werner. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Huh. Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil... Not this travesty that seems straight out of the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her.
After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. The police remain unaware of this tragic event? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है Some ये of them सब may be करवा रहा है hiding behind their masks. क्योंकि They हर एक conceal चीज से many इसका कैसा things. रिलेशन है But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new मुझे क्या लग रहा है heights. यार How do you know I इसका वो even करेगा want the रोल case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. Fabio was sacrificed on the altar during an occult ritual. और क्या क्या आया बहुत सारे अभी आए This masterful forged dagger is heavy and unbalanced but sharp, made of gold. Okay, handle is made of gold. Handle was bloodstained on. मतलब ऊपर भी किसी का खून था उस टाइम पे फिंगरप्रिंट्स का वगैरह नहीं था शायद से उस टाइम पे तो ब्लड किसी और का हो सकता है वो कि ये तो हो गया यहाँ पर और कुछ है क्या दिखता है हाँ इधर कुछ है The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. This elaborate box must be for the ritual dagger. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. This oil has a slight aroma of flowers and olive. है कुछ आप ओके cigar Enough cigars to burn down the entire mansion. blood stains हाँ An open wound spoiled the carpet. चाबुक Why don't people tidy up after themselves? चाबुक ही है ना ये और क्या बचा अभी तुमको तो गया ना शायद Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. It didn't break only because it was unopened. ये स्मोकिंग लॉन्ज ओके तो इधर शायद से हुआ है कुछ ब्लड गिरा है वगैरह तो इधर कुछ स्ट्रगलिंग हुआ है और उधर जाके फिर उसकी बॉडी डाल दी इधर कुछ नहीं है ना
Props, decorations, and tools for a more detailed set. एक ड्रेस किसका ये? Wet handprint. Identical to the robes the guests are wearing. The picture is empty, but with puddles around it. मतलब किसी ने यूज किया है. Blood clots are adhered to the sides of the drain. जिसने मारा है वो भारी है मतलब अभी भी. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio, Manchos. Manchos तो ये है ना? The capital F on the key fob might refer to Fabio. किस चीज़ की चाबी है ये? The capital F on the key fob might refer to Fabio. The key is similar to the one that Vogel gave me. ओके, तो उसको पता था लॉक, मतलब ये इधर अंदर ऐसे कैसे आना है, मतलब उसको चाबी था उसके पास. और क्या बचा? मास्क, अलग मास्क. Would you recognize me in one of these? I suppose not. This is a different ritual. Manchio, naked woman, bed of glass. हाँ, यही वही है जिसके बारे में अभी हुआ था, जो वही तो रिचुअल है ये. Don't ignore the guests. At this time, stop boring them. They don't want to hear about your stupidities और ये जो भी है. How can anyone accept such behavior? इधर वो मटिस सा थी. A useful tool for a हाँ, ये disguise लास्ट केस है, arsenal. खत्म हो जाएगा अभी. आज खत्म ही कर देंगे इसको. अरे रूम्स पे रूंगा आज तक. मेरे को लगा अभी और कुछ बचा क्या यहाँ पर? हाँ, बस. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. कॉपलिंग्स मिले उसको. अच्छा, यही है अपना. वो यहाँ से भी डायरेक्ट जगह है, तो वो मार के इधर पीछे आया, इधर सब क्लीन वगैरह किया और उधर से निकल गया. ये सीन क्या है? अभी कुछ है क्या इमेजिनेशन वगैरह? इस पे अभी बात करते हैं. You've got a lot to do, Sherlock. माइंड बैलेंस में. कुछ इमेजिनेशन का नहीं है. ओके, यही है शायद से. This one looks like a twisted symbol of Venus, drawn in a hurry. यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर है. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. A bloody handprint on an armchair. The wounded person was here for some time. There appear to be no further traces leading to the altar. So, Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps, perhaps. I think I can deduce what happened here. You've got a lot to do, Sherlock. ओके, अभी सारा अज्यूम करना है जो भी हुआ है. दूसरा सिनेरियो क्या है? और क्या है?
हाँ ये क्या हो रहा है? एक मिनट, कुछ वेपन है अभी? अभी तो कुछ वेपन तो है नहीं इनके पास। पहले शायद स्ट्रगल हुआ था। नहीं एक मिनट, इधर जाके फिर सिर्फ ये किया है उसने, फाइनल जो चीज़ है वो की। मारा तो उधर था बराबर, यही सोचा था अपन। हाँ ये इधर ये हुआ। दूसरा क्या चीज़ है इसमें? नहीं इधर घुसाया नहीं उसने, घुसाया उधर जाके हुआ। ये हुआ, फिर बाद में इधर कुछ ड्रिंक्स है और थोड़ा सा ब्लड है। दूसरा क्या सिचुएशन है इधर? नहीं खुद नहीं गया वो, क्या पता हो सकता है, देखते हैं। फिर उसने क्लीन किया यहाँ पर? नहीं उसने नहीं, जो रैंडम था उसने। और फिर उसके कपड़े बदले उसने, फिर उधर से भाग गया। ये बड़ी स्टोरी बनी है रे बहुत। ये जाने के टाइम है कि आने के टाइम है? बंद करने पे दरवाजा, फिर समझ जाएगा। हाँ अंदर से भी लॉक किया था उसने राइट। You're not even trying, Sherry. ओके क्या रॉन्ग हो रहा है अभी? ये तो ठीक है। You're not even trying, Sherry. Concentrate. ड्रैग नहीं हुआ होगा शायद, क्या लग रहा है? ड्रैग हुआ होता तो ऐसा ड्रैगिंग के निशान। You're not even trying, Sherry. Concentrate. अयान तेरे को क्या लग रहा है? You're not even trying, Sherry. Concentrate. ब्लड ड्रॉप्स है तो शायद स्टैब हुआ हो। स्टैब हुआ है ना, इधर ही हुआ है क्योंकि है ना देख, तलवार इधर ही, जो चाकू है वो इधर ही रखी थी और उस बॉटल के ऊपर वो जो नीचे गिरी है ना बॉटल, उस पे इसके निशान थे। ये जो नीचे बॉटल गिरी है ना उस पे ब्लड के स्टेन्स है, तो मतलब ये तो हुआ है इधर, ठीक है। पर ये अकेला नहीं आया शायद, ये ऐसा है, इसको ऐसे ड्रैग करके ही लेके आए हैं। अभी देखते करके जरा बराबर है कि हाँ। The bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes.
The killer washed themselves and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor. मेरे को लगता है ना ज़्यादा ब्लड नहीं गया होगा I know what happened here. उसके ना क्या बोलते हैं उसको उसके सर पे मारा ना तो थोड़ा ही ब्लड है ज़्यादा ब्लड नहीं है देख थोड़ा हाथ पे था उसके वही और जो इधर ड्रैग करते करते थोड़ा नीचे जो गिरा और वो वैसे भी घिस घिस के गए तो शायद थोड़ा सा पोंछ ही लिया होगा और उस बंदे ने भी पोंछ लिया होगा शायद जाते जाते ये उसको पूछ रहा है शायद इसके बारे में माइंड पैलेस में जाके देखते क्या हुआ Murderer had the key to was in possession of a key to altar room and locked the door. Okay. Fabio was sacrificed on the altar during an occult ritual. नहीं. Ritual was staged. It was a cover to true murder motive. ये रहेगा. ये murder करना ही था उसका. क्यों करना था वो पता नहीं है. ये तो नहीं हो रहा है. It's clear that murderer had a key. If I'll shrink the circles of suspect. ठीक है. हाँ वो उसको पता चल गया कि किसको किसको I'm starting to put the pieces together. तो भी समझ Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. Let me see what I can do about all this. अरे The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by... He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely main hall entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. I know you can untangle this mess. ओके इसको देखना भी है कर्ट मंचियो यही है ना कर्ट मंचियो I need a rest from my insatiable wife. किधर बुलाओ I've worked up an appetite since the last party. एक मिनट में देखा नहीं प्रॉपर्ली क्या बोला वो The owner of the mansion Vogel doesn't know who could have the keys to the room. Kapus asked Mr. Mankios. तो वो कहाँ पर है? Golden Star. Golden Stars वाला बंदा कोई है? Golden Star, Golden Star, Golden Star. कोई दिख तो नहीं रहा है रे गोल्डन स्टार का कोई अंदर तो नहीं बैठा ओ भाई बाजू के रूम में क्या चल रहा है
Star वाला mask. Kurt Manchos, I presume? I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchos. ये Mr. Vogel asked me to help you. टेढ़ा है. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Okay, Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh, yes. He will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? What's going on? रेड हुआ क्या? Freeze, filth. You're under arrest. रेड हुआ. अरे यार अभी भाग जाएगा वो. शिट. हाँ तो ये अभी जो जिसने मर्डर किया उसी का काम है शायद, जो रेड करवाया वो. रेड किस बात की? इलीगल होगा ना शायद. Committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand, and apologize for the inconvenience, Your Grace. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by या फिर releasing मर्डर हुआ ये fleas like बता दिया you. होगा वो लोग को. Thank God we have Vogel in his letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig? Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes? वो rest her soul? माइक्रोफ्ट ने डिटेल दिया था लगता है ये. You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? You must help me. It would mean a great deal to me if you could find any information about that day. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. I'm glad we managed to get the scoop before the raid.
माइंड पैलेस में कुछ है अभी। पिंचेट इज अ मेजर डोमो। मेजर डोमो क्या होता है? मेरे तीनों की रिलेशन नहीं है। ठीक है। ये वोजल से बात करनी शायद। कहाँ मिलेगा ये वोजल अभी? Look, I found Werner. Werner, are you all right? Oh, yes, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? So the mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? There are lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really? How many white lies have you told on this island? Why not for me? Why not another? That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. मैं सबको लॉकअप में रखा है। ये किसका रिपोर्ट है? रेडी हुआ था। ग्रोस इंडिसेंसीज एंड अननेचुरल बिहेवियर्स, मतलब ये जो कर रहे थे, मतलब ये चल रहा था ना रे, सेक्स स्कैंडल था ना, और प्लस कल्ट के रिलेटेड काम है, तो इसीलिए वो रेड ये आया, उनको ये खबर आई होगी। प्लस ड्रग्स वगैरह भी हो रहे थे, तो उस टाइम पे ड्रग्स लीगल थे नहीं लीगल थे वो पता नहीं। ओके, अपन अभी अपने को एविडेंस टिकट मिला है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ये चाबी भी लेनी है सर। Back on track to solve the case. ये वो पिंचटी नहीं किया है, पिंचटी नहीं इन्फॉर्म किया, तो पिंचटी मर्डरर हो सकता है। I'm witness of reports of suspicion. Okay, loud noises है वो उसने सब ये लिखा। He even appears to have been first person to find a body that makes him perfect suspect. I should tell constable also. Okay, ठीक है। किधर है? नहीं, आर्काइव्स में क्या ढूंढना है?
I'm not supposed to know anything about this. I can't follow you here. I'm not supposed to know anything about this. I'm not supposed to know anything about this. I can't follow you here. I don't think I can tell you anything about this. Do I know him? The major domo of the manor. He cleans up after you? Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. I know you can untangle this mess. This area is restricted. May I ask for your assistance? I'm not in the mood to talk to moneybags. I'll visit you later. You'd better ask me a question I know how to answer. Have you considered Mr. Santos Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. Could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number 7. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you. Room number 7, na? 1 3 5 7. Oh, yeah. Mr. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Repaired multiple times. Okay. हाथों में कुछ निशान, खून के, पानी के, शूज, ये शूज पे ब्लड है, stepped in blood, yes. Psoriasis or allergy. Is your greedy nature responsible for the lack of taste and attention to your appearance? The cheap makeup, shabby and dyed clothes? How do you explain those, Majordomo? The means to practice my profession are limited. I'm sorry you noticed it. The parties overshadowed your state. You are lucky Kurt Manchios's attention was concentrated elsewhere. In a decent household, you would be asked to leave for far less. Yes, his attention was undoubtedly concentrated on something other than my appearance. But one detail stands out on your dirty rags and shoes. The drops of blood. Oh, that. I don't know anything about it. Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always Fabio-centric. And Batista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. अभी भी आ रहा है?
अभी नहीं ना, वो शायद कुछ प्रेस वगैरह हुआ रहेगा मेरी तरफ से, इसको होगा। ओके ठीक है, माइन पैलेस में कुछ आया देखते हैं। Failed to notice a blood stain on the side of the shoe while cleaning himself up. Okay, ये हो सकता है। और कुछ है? Failed to notice a blood stain on his shoe while cleaning himself after master accidentally stepped in. ज़्यादा मेरे को ये लग रहा है। Despite being married, he appears to be poor. Please let me out. किसके पास जाना है? अभी कुछ बोला था अपने को? Continue our investigation while I look at the papers. You've got a lot to do, Sherlock. Please let me out. Santos, my helpful slum. You begged me to include you. But कौन था? हाँ वो मालिक ना शायद। हाँ उसका विल है कुछ उसके साथ। I recognize the key from the altar room among these. He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love. Cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a major domo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship.
बाकी कुछ रिलेटेड नहीं है ना शायद. Please let me out. The air here is rather refreshing. I'd even recommend... that some of my friends visit the place. Please let me out. किसको क्या पूछना है अभी? I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. You are Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Fabio knew the risks. Selling his body to degenerates who hid behind robes and masks, it could not end well. That's only your distorted understanding of safety. Officers here, they wear robes and masks too. It's a dangerous lifestyle. But it's not as though we were given many other choices. I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. Nervous. Self-inflicted. Cold and barely visible. Slave वाला branding. blood filled bruises. Dissociated from a body. You have both old and new scars. Some from the time when you were a slave with Fabio. Other scars have a different origin. The guests pay good money to torment you? I am skilled in giving pleasure, but I don't participate in such practices. I thought your body was... For sale. It's true. Many unwanted things were done to my body. And the pain helped me to discover... Occult deities? Yes, the tattoo speaks loudly of it. Yes. Your gods abandoned me, and the ones I favor now are more protective of me. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Gordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite, sometimes. ये हो गया और क्या है ये भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा ये भी हुआ था स्ट्रगल भी हुआ था तो इसमें से कौन सा हो सकता है वो अपने को पता है
अगर है ना ये अगर ये करेंगे तो देखिए ऐसा होगा। ये ऐसा रखते हैं फिलहाल के लिए, आगे देखते हैं फिर क्या होगा। अभी है ना एक्चुअली है ना इससे बात करनी होगी, क्या बात है उसका, क्या नाम है उसका, जो ओनर है ना उससे एक बार बात करनी पड़ेगी। मोटिव तो नहीं है, हाँ इस पे लग नहीं रहा है मोटिव, क्योंकि वो प्रेमी भी था ना उसका। अभी वो ये बंदा भी है क्या, वो उसका ओनर है, यही ओनर है क्या? Good day, Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained bores. Although I don't mind meeting young officers, the new blood here. If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the boars again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. इसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। Where's makeup? Okay. Rash from exposure to hair dye. Okay. Washed hands in a hurry. Oh. Okay. Lavishly expensive. Stickler for cleanliness. You are so focused on cleanliness that these products are severely damaging your skin. I would laugh at you. Ha! If only my cheeks didn't hurt. Not exactly. I try to take care of my body. A young man who has yet to confront his own aging couldn't hope to understand. These chemicals are quite literally melting your face. Ah, the price of beauty. I'll be fine. I'm sure of it. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true labourers, I see. What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. शायद ये मैटिस्टा से jealous था और इसकी वजह से किया हो. His performances were flawless. He deserved his payment.
Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. You'd better ask someone else. I've no idea about that. I've no idea about that. I've no idea about that. I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. He has only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I taught him. That's not something I know much about. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. I've no idea about that. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. I've no idea about that. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Man? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. माइंड प्लेस में 3 चीजें आई माइंड पैलेस में ये इसको ऐसे करना पड़ेगा अभी अगर ये आया तो उसके बाद carefully prepared himself for the depravity but blood after ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है क्या करे समझ नहीं आ रहा मुझे ऐसे रखते हैं फिलहाल के लिए शायद अभी एक कड़िया सब ज्वाइन हो गया I know I can handle the news. Please. हो गया ना शायद अभी out. Please let me out. ओके अभी शायद हो गया है अभी अपने को उससे ही बात करनी है डायरेक्टली पुलिस अभी तो और किसी का उसने नाम तो दिया नहीं अपने साथ तो वही बचा भी Continue our investigation while I look for the papers. ओके अभी और क्या बचा फिर उसके रूम में और कुछ था क्या सुराग कलेक्ट करने लायक यही है ना वो
ये वो I can't wrap my head around such a tragedy at my party. इसके बारे में इसको पूछ के देखते हैं अगर पता होगा। I know I can handle the news. अभी इसको फिर पूछना है क्या करना है अभी। The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. अच्छा तो मतलब अभी शायद कंक्लूजन ही ड्रॉ करने डायरेक्टली। कुछ कंक्लूजन तो आ नहीं रहा है अभी तक। इसके बारे में किससे बात करें? Continue our investigation while I look for the papers. एक मिनट मैं देखता हूँ एक बार आगे का क्या है। वो डायरेक्ट अपने को ये करना है अभी क्या बोलते हैं उसको ये सब सुन के ना डायरेक्टली अपने को अपील करना है अभी डायरेक्ट केस रजिस्टर करवाना है। Good day. Your ticket, please, if you want me to help you. I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a ritual murder. What a bunch of degenerates. Wait a second. I'll bring it to the table. A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. All the keys of the mansion on one golden ring. Her key to the altar room.
A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. That's not for bedtime reading. ओ भाई हाँ इससे ये भी हो सकती है That's not for bedtime reading. रिचुअल में मतलब रिचुअल में मान के That's not for bedtime reading. ये भी हो सकता है अभी इससे पता मतलब लाइक थोड़ा आइडिया आ रहा है और भी कुछ है क्या इसमें That's not. That's not for bedtime reading. That's not for bedtime reading. This Ex Libris belongs to Manchios Library. The book describes a ritual similar to the one performed in the altar room. The letter was found in Vogel's house. Vogel के पास है. Not around me anyway. Only it's too. I can please speak and play with anyone. Not another notice you pay me, but you haven't got me. Only the donations through. Letter from Fabio to whom था बड़े? Not the time for privacy. इसको वो डॉक्टर ये था An emergency kit for boredom. क्या उसका जो ओनर है उसके लिए था क्या बचा भी इसमें कुछ Werner's personal sketchbook. Thank you, officer. वर्नर भी रिलेटेड है इसमें Did you hear Basile? हाँ ये वोगल में ही है पावर ऑफ लव ये इसके बारे में उसको पूछेंगे इसके बारे में पूछेंगे According to scientific study and by the scientific data, it has been observed. इसके बारे में बात करेंगे. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Mann. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for... You being on a bender? Touché. Please let me out. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. Do you recognize this book? Could Matista have borrowed it from your life? She didn't ask me. How ungrateful.
The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures. Werner Roger took the letter himself, felt under the effect of various substances, slipped the letter into ये मटिस्टा के साथ बात करनी है। लेटर फ्रॉम फाबियो के बारे में और किसके साथ बात करनी है? The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. उससे बात वो लड़की से भी बात करनी है। This book, The Power of Love, Blood and Mandrake, what do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is really so lazy. If you say so. तो भाई ये इतनी अंधविश्वासी है तो हो भी सकता है यार वो चीज। Could Fabio have written this letter to Kurt Manch? Oh, that could be. I never thought Mr. Manchios could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchios. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchios. Was Fabio afraid of Mr. Manchios? Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away. Do you practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash away the ugliness of the world? Sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic. Love charms lately. Fabio became so distant. I just wanted him to be with me, but I suppose I'm not as skilled as I thought. हो गया केस। अगर मैंचियोस है तो ये ऐसा आएगा। क्या लग रहा है? फैबियो ही लग रहा है। फैबियो बोल रहा हूँ, वो मैंचियो क्या नाम उसका? सरनेम। वही है, फिर चलो कर देते हैं फिर क्लियर। खत्म हो गया पूरा। Manchios was heartbroken and panicked and did not mean to kill Fabio. The improvised ritual was a desperate attempt to cover up the crime. The prison sentence should be enough for his harsher punishment is the death of his love. Killed Fabio in cold blood. He staged the crime as a ritual to blame
He planted the letter in Virgin's pocket to avoid suspicion. Manchios has no consideration of life of others and deserves to be hanged. कुछ भी हो सकता है, दोनों भी, कोई भी ले लो. I've nothing to say about this. This letter proves nothing. Fabio wrote it to Mr. Manchios. It's time to free Mr. Vogel. Do you really think I'm that naive? I need proof, not words from his friend. Very well. Mr. Pinchetti told me that Mr. Manchios was lavishing Fabio with expensive and eccentric gifts. The letter mentions rich rewards and attempts to buy Fabio with them. It was written to Mr. Manchios. Who else was showering Fabio with luxuries to buy him? It doesn't fit Mr. Vogel's character. Look here. We had a deal. Give me the murderer and then take your friend with you. I won't budge otherwise. Well, fine, but you're just wasting time. Continue out. अच्छा ये किधर का रिपोर्ट का करना होता है ये चीज? मिल तो गया अपने को बस. Investigation while I look for the papers. एक मिनट मेरे को देखने दो. अच्छा उसको जाके डायरेक्ट अक्यूज करना है. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you planned. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. We can very often deduce someone's life by their shoes or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in the soap from under. The devil is... Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a staged murder was certainly not planned. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you. For the parties, it was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, early 60s, who hosts the cream of Cordona's society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful, and Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. Fabio played with your feelings. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way that you would have liked. You wanted to be loved, but Fabio shattered your dreams.
In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You were passionate, and so you struck him. Once you understood your mistake, it was too late. You were afraid, so you staged the ritual. With such a story, you might be sentenced to a few years. It might clean your conscience, and soon the case will be forgotten. No. No. This is my decision. I'll talk to Constable Oswald to see what I can do. बट इसने एग्री नहीं किया ना उस बंदे ने एग्री नहीं किया कि वो है करके तो उसको रॉन्गफुली करना चाहिए क्या देखते पहले यही करना है क्या There's no fool like an old fool. Kurt Manchios did it. A young boy played with the heart of an old man. The latter couldn't handle it. The evidence I obtained clearly shows that the quarrel was not intended to end badly. It was an accident. Showing pity towards your own kind, Holmes. Whatever. All I'm saying is that prison won't take much away from an old and crushed man. Fine. A big name like that will still give me a promotion. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones. Including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I've found is on the desk here. Take it. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. ओके तो मतलब ये ऑटो को ये कर दिया था एक्यूज करके मतलब उसके ऊपर आ गए थे इल्जाम Garden. There's a garden behind our manor. How could I forget? That's what... Oh, you did it, Sherlock! The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo! It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? Whatever the truth, it had to be revealed. The victim deserved it. Well, you seem confident in the value of your actions. I guess since I'm free, you were heard after all. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still, I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity, and it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? Oh yes. It's a struggle, but yes, we can make our own decisions. That's what I fight for. And what an endless fight it is. Will you ever give yourself a break, Sherlock? You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself.
How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, I shall bid you adieu. Did you hear Basilio Capello is in jail? A dead body. Sherry, please listen to me. Sherry. John, I always listen to you. You don't have to do this. You don't have to go through. I don't know what is beyond this door, but I can feel it. Buzzing, angry, like a fly at the window. I know. I can sense it too. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain? And truth. You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona, so many others we can help. There is no coming back from this. John, my animum, my brother, there is nothing more important in this moment than this truth. I know you fear for me, but my path was set long ago. I can no more step off it than I can ask the avalanche to roll back uphill. Just please be careful, Sherry. I love you. Quite. Come on. We'll go together. Why didn't I remember we had such a big garden? Maybe you forgot it for your own good. अरे स्लिट भी है और ड्राउंड भी है. Is that the raft we made together, John? Looks more like a pile of rotten planks now. अरे मेमोरी. कब? Come here, Sherry. Hurry! ये जॉन है शायद.
ऐसे ही देखते रहना है कि आगे जाना है? These must help calm her down. अच्छा What? ओ भाई अपन ने जो टी दिया उसी से शायद मर गया। What are you thinking about? Is everything all right? Don't go, Mother, wait! Mother's work journal. I liked poring over the detailed pages and reading about my parents. I remember this artifact from Mother's collection. Here it is. We'll just borrow it for a while. Did you hear that? Someone's coming. Let's take a peek. You call this progress? Charlotte, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. Any result is progress, even if it is a worsening of her condition. It informs my... No. I have made my decision. She must be sent to a legitimate medical facility. I will not let her hurt Sherlock. What? Master Holmes, you do not understand. That will be all. I expect you to have left the house by week's end. Sherry, say something. Can you hear me? You're scaring me. I'm waiting for you. Sherry, come here, darling. Coming, Mother. This... Take me to my flowers, Sherry. They must already be in bloom. As you wish, Mum. I bet you missed the fresh air, didn't you? Terribly. The sun is far brighter than I remember. But I like it. We can walk each day from now on, if you want. That would be wonderful. Just look at them. The stars of the earth. Even the sky must be jealous of their beauty. Indeed. Mother, would you like to go around the water? That would be perfect. I always wanted such a nice pond in London. It looks so peaceful. Mycroft knew you would like it. We should put some fish in it, don't you think? How about some carp? That's a nice idea. Let's visit your father's tree. It grows so fast, just like you. We could even build a tree house in it. Yes, Sherry.
speaking of your father, could you call him out, please? Mom! He's... I'm sorry. He passed away. He's gone. No, he's not. I'm telling the truth. Did you forget again? No! Don't you dare say such things! You are a liar like all the others! Mother! Don't call me that! Oh, You aren't fooling me! No! Mom, it hurts! My son would never lie! Mom, stop! Who are you? Reveal yourself! Please, stop! It's me, Sherlock! You are not my Sherry! Give me my son back! Oh, bhai. तो डॉक्टर ऑटो कल्प्रिट नहीं है एक्चुअली, मेंटल स्टेट बहुत ही खराब हो गई थी इसकी मदर की। कौन सा करना है? जॉन को भूल जाना है, क्योंकि जॉन भी एक, वैसे देखा जाए तो इसके दिमाग के अंदर की एक बीमारी है, या फिर खुद गिल्ट में रहना है। मतलब जो भी दोनों में अपन यही है, मतलब शेरलॉक ही जिम्मेदार है, बट एक्चुअली जिम्मेदारी ऐसे बोल भी नहीं सकते, क्योंकि शायद उस एलर्जी की वजह से उसको वैसे दौरे पड़ रहे हो, क्या पता। चल फिर। Sherlock. Sherlock. Can you hear me? Come on, wake up. Get off me. Sherry. You knew, and more than that, you hid it from me. You couldn't bear the truth, Sherlock, so I shouldered it for you. I took your pain, your horror. You. It was your idea. The sedative, that was you. She was hurting us. Sherry. I couldn't bear to see you suffer. So you killed my mother. My worst impulses, my darkest thoughts, they're you. You were a lie, John. A fiction. A crutch. No, I was a friend. Sherlock, please. Sherlock? What? Are you okay? I don't know. I told you not to come, Sherlock.
Where is he? Who? Your friend, John. He's beside you. Was all this worth it? Is he worth it? Why is he here? I think, in his own way, he was trying to protect me. From a truth I couldn't bear. But now I must face it. कुछ glitch हुआ. Whoa, 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 Sherry. What are you doing? There is only one way through. Through what? What do you mean? My entire life, my work, my mind, has been compromised by a malignant force, by a perversion of rationality. By you, John. You're मुझे a लगा tumor. था last में अलग होंगे ये दो. You're a poison. Sherlock. And like a tumor, you must be excised for the health of the patient. No. No, this is the lie, Sherry. I protected you. I am your friend, your brother. You know me. You know me. I was always there for you. When your mother lashed out, I took the hit. When you were alone, I held you. She was sick. She needed to calm down. I helped her. You killed her. No. Yes. No. But it was not meant. Please. Please. I'm scared. I know. Are you all right? I think, on the balance of things, no. That is good news. To be unaffected by today's events would place you in a different pathology entirely. Your time on Cordona is over, Sherlock. Tomorrow we shall board a vessel back to London, and all this, it stays here. He's gone, Mycroft. I needed to take control. He would help me, but it was a lie but he's gone. I knew he was wrong. Do you see? I am free. I just had to act. Yes. In that respect, you are your mother's son. Why are you here? Closure, I suppose. And to help a friend. You and I are not friends. In a race between the thawing of the ice caps and our friendship, I would buy a boat. Ha! Is that right? I can see it now. I know what you did. What did I do? You needled me. From the moment we met, you were searching for weakness. You pushed me to pursue the truth about my mother. You questioned everything I did, everything I believed, to break me. To blur truth and fiction, reality, morality. A saboteur in silk. Was it vengeance, Werner? Or do you prefer Klaus? Excuse me? You are Klaus Richter, Otto's younger brother. वो You भाई hold me वो responsible for his end. ये था. Ha!
There was no love lost between me and my brother. I am sure you can relate. Otto was merely the gravity that pulled me into your orbit. Or you into mine. Once I met you, I could not keep away. Why? What reason do you have for all this? To help you. You're lying. To show you that you were wrong. More lies. I know you now, Werner. Try again. To see what had happened. Or is that yet another untruth? Does it matter? Take your pick. Who cares? You're my masterpiece. I turned Sisyphus into Ozymandias. You could not see the futility of your quest until I helped you to let go of the rock. And now, nothing beside remains. I remain. Despite you, and to spite you. It is a matter of will and power now. Will you overcome this, or shall you decay? Oh, on that note, I brought you something. I want nothing more from you. When one wants for nothing, Sherlock, the best thing to get them is something personal. So, here you are. Now, please excuse me, but the gallery calls. I'm already conceiving my next project. ओ भाई ये क्या है? You really are beautiful. क्या डिपिक्ट करता है ये पिक्चर आयान? कुछ समझा उसमें से तुझे? I am all right. I returned to London and enrolled at Cambridge University. Their professors leave something to be desired, or perhaps I simply lack the interest in all but a few lectures. I prefer to spend my time at the local hospital pursuing things of practical use. Medical research, chemical tests and the like. Empirical truths. I try not to think about you. I try not to think about anyone unless it is in the course of an investigation. I've started to help people with their menial mysteries. It keeps the mind occupied. I cannot risk otherwise. I'm not like her. I'm not like you. I am all right. मतलब ये सब शायद चैप्टर 1 इसका ओरिजिन था कैसे शेरलॉक होम्स बना। आगे जाके अपना ये रहेगा। I found it! I found it! I found it! And what is that? Hey, Sherry. ये जॉन है ना ये? How far, bruises may be produced after death. How are you? You have been in Afghanistan, I perceive. How on earth did you know that? Never mind. The question now is about bruising. No doubt you see the significance of this discovery of mine. It is interesting, no doubt, but practically... It is the most practical medico-legal discovery for years. Had we these data sooner, hundreds of men would have paid the penalty for their crimes. Cases oft hinge upon how a man died. Now, we can know which wounds he suffered alive, which occurred post-mortem, and what instrument was responsible. And ergo, one will soon be able to calculate with utmost precision when and where death occurred, sparing the innocent and damning the guilty. Well, then you are to be congratulated. Indeed. But you came here on business. Correct again. I am looking for someone with whom to take diggings, and heard you were complaining that you could get no one to go halves with you. I have my eye on a suite in Baker Street, which would suit us down to the ground. You don't mind the smell of strong tobacco, I hope? I smoke ships myself. That's good enough. I get in the dumps at times, and don't open my mouth for days on end. Just let me alone, and I'll soon be right. What have you to confess now? It's best for two fellows to know what bruises each other carries before they begin to live together. My last companion and I... Well, I object to rows because my nerves are shaken. And I get up at all sorts of ungodly hours.
And I am extremely lazy. I have another set of vices when I'm well, but those are the principal ones at present. Do you include violin playing in your category for route? It depends on the player. A well-played violin is a treat for the gods. A badly played one. Oh, no, that's all right. I think we may consider the thing as settled. Oh, forgive my manners. My attention wavers. Sherlock Holmes. Dr. John. John. तो वो जॉन वही वाला जॉन था या कोई और बंदा था ये? अरे ये एस्केप नहीं होगा ना? उसका असिस्टेंट था क्या ये जो लास्ट में आया वो एक्चुअल असिस्टेंट जो होता है? अच्छा तो वही है ये। तो अभी एक्चुअल चालू होगा शायद, ये ओरिजिन दिखा है उसका कैसे बना, अब उसका रियल चालू होगा लगता है नेक्स्ट चैप्टर से। So, okay guys, I'm ending the stream now. If you're new to the stream, please don't forget to subscribe. Also hit that like button, it helps me out tremendously. कल 9:30 के बाद होगा stream. Until then, stay lit, stay funky, and stay furious guys. Bye bye.